इसी को रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके एक जगह हो जाएगा और उसी को डाल देना, ठीक है? ठीक है ना? नेट का झंझट भी खत्म। किसमें आएगा? डाउनलोड में आएगा? नहीं हो जाएगा ना, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं हो जाएगा ना। अब नेट का जरूर लेना है। Good morning, everyone. Myself Raj Kaushal Kumar. My topic is building construction line. Presented Uttam Kumar, Raman Kumar Ranjan, Niklesh Kumar. Introduction to lime. Lime is an important cementing material used in engineering construction. Cementing material, the material which has the capacity of holding structure units like bricks, stones, aggregate. Examples: lime, natural cement, gypsum, Portland cement, etc. Lime is an oxide of calcium CaO. Source of lime: limestones from the stone hill. Boulders of limestones from the beds of old rivers. Conker found the ground and cells of sea animals. Note: purest form of lime present in sea animals. Chemical formula of limestone is CaCO3. Next. Respected teachers and dear my friends, good morning to all of you. I am Uttam Kumar from 4th semester GC Banka. Now I am going to representing the PPT on the topic of building construction material lime. Let's start. Lime is a rock in marketing in three types, which are quicklime, hardened lime, and hydraulic lime. Classification: based on its composition, it is classified into quicklime, hardened lime, and hydraulic lime. And next is I represent and I discuss about quicklime. It is also called white lime and pure lime. In it, calcium oxide is greater than 93% by rating remaining being magnesium oxide and very little clay. Quick lime is amorphous, it means a place white material. It has very high affinity for water and carbon dioxide. It will absorb the moisture quickly from atmosphere and converting itself to a carbonate of calcium oxide reacts with carbon dioxide and makes product calcium carbonate. Calcium oxide also reacts with water and makes product calcium hydroxide. Calcium hydroxide reacts with carbon dioxide and makes product calcium carbonate. And next, quick lime is also known as the high calcium lime, pure lime, rich lime, or white lime. It is popularly known as white lime, as it slays vigorously and its volume is increased to about 2 to 2.5 times. The volume is increased by that of quick lime. It is prepared by calcining comparatively pure carbonate of lime, which is composed of 95% of calcium oxide. The percentage of impurities in such limestone is less than 5%. Properties of quick lime: it has some properties. I will discuss its hardness very slowly. It has high degree of plasticity. It is soluble in water, which is changed frequently. Its color is perfectly white. It shades slowly in presence of air. It shades vigorously. And I will also discuss use of lime. It is used in wine washing and plastering walls. Wine says
It forms lime mortar which sets the thin joint. With Surki, it forms lime mortar which possesses good setting and hydraulic properties. And then next topic discussed by Raman Kumar Ranjan, classification hydraulic lines. Thank you so much. Uttam Kumar sir. Good morning, sir, and my dear friend. Myself, Raman Kumar Ranjan from the Banka. My topic is classification on lime. Hydraulic lime. This is also known as water lime. As it set under water, it contains only and some amount of ferrous oxide. Depending upon the percentage of clay, the hydraulic is divided into the following three types: heavily hydraulic lime, moderately hydraulic lime, eminently hydraulic lime. Note: the increase in percentage of clay makes it difficult and increase the hydraulic properties. With the about 30%, if clay, the hydraulic lime resemble nature cement. The hydraulic lime can set under water and the thick walls where there is no free there is no free circulation of air. The color of hydraulic lime is not perfectly white. If therefore appears less sanitary than the fat lime. It forms a thin paste with water. It does not dissolve in water throughout. It is frequently changed. Hydrated lime. Hydrated lime is a dry, colorless crystalline powder manufactured by treating calcium oxide quicklime with water in a process called slaking, also known as slake lime. Hydrated lime it is used in the production of mortar, plaster, cement, paint, hard rubber production, petrochemical, and in the tanning of leather. Next topic discuss with Nicholas. Good morning, everyone. Respected teachers and my dear friends. इसके पहले हाइड्रेटेड लाइन के बारे में बताया गया है, उसी का यूजेज है. हाइड्रेटेड लाइन इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ रोड सरफेस. रोड सरफेस पे स्टेबलाइजेशन करने के लिए हाइड्रेटेड लाइन का यूज करते हैं. Hydrated lime can also used as a filter in asphalt to improve resistance to high temperature routine. Hydrated lime is supplied to water treatment industry for softening pH adjustment. pH मतलब power of hydrogen adjustment, coagulation and removal of impurities. मतलब कि जो हम पीने का पानी यूज करते हैं वो उसका pH इसके साथ होना चाहिए, तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम हाइड्रेटेड लाइम का यूज करते हैं. IS क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, मतलब जो लाइन का डिवाइडेड किया गया है वो 20 मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड थर्ड डिवीजन आर मिसिंग है 712 एंड 1984 जो डिवाइड किया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई एंड क्लास ए. Class A lime is a eminently hydraulic lime which used to structural purpose. इसको structural purpose के लिए यूज किया जाता है. और जो इसका रेशियो रहता है लाइम एंड वाटर का 1:3 रहता है. एंड ये 40 डेज में स्ट्रेंथ जो गेन करेगा 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर गेन करेगा एंड 28 डेज में 2.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा. सेकंड क्लास बी सेम है. अब इस क्लास बी लाइम इज द सेमी हाइड्रेटेड लाइम व्हिच इज यूज्ड फॉर मोटर masonry work. It can be supplied either as quick lime or as a hydrated lime. Minimum compressive strength lime and mortar का इसमें भी 1:3 रहता है
अब बट इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो गेन करता है उसमें डिफर होता है। इसमें 14 डेज में 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 28 डेज में 1.75 mm स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। क्लास सी इज द फैट लाइन व्हिच इज यूज्ड टू मेनली फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टरिंग। फिनिशिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं क्लास सी लाइन को। व्हाइट वॉशिंग जो दीवार पे जो प्लास्टर सब मारते हैं, व्हाइट वॉशिंग एंड सुटेबल एडमिक्सचर सच एज सुर्खी पहले के टाइम में जब सीमेंट नहीं था उस समय लाइन को ही सीमेंटिंग मटेरियल के तरह यूज करते थे। मतलब दो ब्रिक को जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए लाइन को ही यूज करते थे, जिसको सुर्खी बोलते हैं। प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक मोटर्स, it is to be supplied in hydrated or quick form. Next, class D lime is magnesium or dolomite lime which is used for finishing coat and plastering. इसको भी फिनिशिंग के लिए व्हाइट यूज करते हैं। एंड व्हाइट वॉशिंग इट टू बी सप्लाइड इन हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म। क्लास ई लाइम द कंकर लाइम which is used to for machinery motor and it to be supplied for hydrated or quick form. Class F if the siliceous dolomitic lime which is used for undercoat in finishing of plaster, it to be supplied in hydrated quick form. Thank you. Any question? वो एक सिलिसियस और एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन रहता है उसमें, पोर्सेलेनिक मटेरियल में, उसका प्रॉपर्टी में भी स्ट्रेंथ गेन करता है। सुर्खियों एनी अदर पोर्सेलेनिक मटेरियल्स टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक मोटर्स। सुर्खी एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि हम पहले यूज करते थे। Pozzolanic is a combination of aluminum and silicious. Slaking of lime क्या होता है? Slaking of, I don't know. Slag line. बन जाता उसको सिलेक्ट करो, प्रोसेस करना तो बोले भी उसका दूसरा नाम तो बता देना। थैंक यू सर। इसका नाम है हाइड्रेटेड लाइन। थैंक यू सर। फॉर्मूला पता है हाइड्रेटेड लाइन का? हाइड्रेटेड लाइन CaOH का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक लाइन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CO। ओके सर। ये सी में पाया जाता है, इसके मतलब सेल्स जो होते हैं ना वही लाइन का वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो एक्चुअल सी में पाया जाता है।
Thank you. Good morning, everyone. My respected sir and my dear friends. Myself, Raksha Kumari, and I am going to start presentation on the topic fine aggregate. And the content are fine aggregate introduction, classification according to natural resources, classification, fine aggregate according to grain size, M sand and river sand, difference between M sand and river sand. Fine aggregate. Fine aggregate are basically natural sand particles from the land through the milling process. The fine aggregate consists of natural sand or any crushed stone particles that are 1/4 inch or smaller. Aggregates less than 4.75 mm in size are called fine aggregates. Sand falls under the fine aggregates and crushed stones or metal under the coarse aggregate. And the classification according to natural resources. Three types are pit sand, river sand, sea sand. And first one is pit sand. They are sharp and angular in outline. Translation and deposition are done by the wind. Such sand accumulation is sometimes covered by clay. And second one is river sand. River sand is found in the river bed in plain area. Grains or river sand is round in shape. This sand is clean and free from salt incrustation. And last but not the least, sea sand. This type of sand is found on beaches and along seashore. These sand particles are round in shape. Grains are often found covered with salt that are not easily separated. Classification fine aggregate according to grain size. Coarse grain size of coarse are lies between 2 to 1 mm, and the grain size of medium are lies between 1 to 0.25 mm, and grain size of fine are lies between 0.25 to 0.15 mm. And M sand. M sand is nothing but artificial sand made from crushing or rock or granite for construction purpose in cement or concrete. M sand differs from natural river sand in its physical and mineralogical properties. Sand is one of the important ingredients at making concrete, mortar, and plaster etc. Earth scientists and organizations are now promoting the use of M sand. It is produced by crushing or quarry and rock stones to desired size. M sand has a sleep content or around 0.2% and water absorption of 1.6% as compared to 0.45% and 1.15% respectively in river sand. This sand is the alternative or river sand. Now my topic is here. The next slide will discuss by Aditya. Good morning, respected teacher and my batchmate. Myself Aditya Rai and my topic reversion. It is naturally available and extracted from the riverbeds or riverbank. Naturally, rivers and easily available the market. This sand large used in construction. The rivers and use of the construction industry is growing with major trust in infrastructure and the demand for sand is also increasing. This sand is used as fine aggregate in mortar, concrete, and natural river sand is this most preferred choice as a fine aggregate material. Next. Difference between M sand and river sand.
M sand manufactured in a factory is naturally available on river banks. The source of crushed sand is a quarry. It is manufactured by crushing rocks or larger aggregate pieces into sand-sized particles in a factory. This is naturally available and extracted from the river banks, river beds, or river. The shape of crushed sand is angular and cubical, and has a rough texture and hence better for concrete. The shape of natural sand is rounded and has a smooth surface. M sand no moisture content. Is generally present between the particles. M इसको अपना लैंग्वेज बताइए एम सेंट और रिवर सेंट में क्या डिफरेंस हुआ सुनो सर अपना लैंग्वेज बताइए ना क्या डिफरेंस मतलब पढ़ रहा है सुन में नहीं रहा समझ में नहीं रहा सर यहाँ से देखने में दिक्कत नहीं दिख रहा क्लियर नहीं यहाँ पर आइए इस साइड में वो तो खुला फिर आगे कर दीजिए यहाँ आप एक्शन देकर के हमने देकर के बताइए अच्छा से एम सेंट और रिवर सेंट में क्या डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सर एम सेंट कैसे बनाते हैं रिवर सेंट कैसे बनाते हैं रिवर सेंट कहाँ से मिलता है एम सेंट कहाँ से मिलता है हाँ एम सेंट जोर से बोलिए इस तरह से बताइए आपको बताना है ना वही इसमें सेंटेंस बताइए वही डिफरेंस बताइए तो एम सैंड और रिवर सैंड में क्या डिफरेंस है बताइए एम सैंड को सर मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है और रिवर सैंड को रिवर नेचुरली अवेलेबल है आपका आवाज कहाँ तक गया आपका आवाज मेरे ही तक पहुंचा ना आगे तक पहुंचाना है बोलिए वही बोलिए अच्छा अपना लैंग्वेज में बोलना और करके नहीं सबको पता चले क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोलिए आप मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है हैंड सैंड करके मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है क्रश्ड करके मतलब क्या ठीक है आप जो है पीपीटी बनाया है ऐसे पीपीटी पर बनाया फिर जब पीपीटी बनाया तो उसको क्लियर भी नहीं करोगे और उसको पढ़ोगे भी नहीं सीधे आ जाता है यहाँ पर क्या है समझा है क्या तो बताओ Difference between M sand and river sand. M sand is manufactured in a factory, while river sand is naturally available on river banks. M sand, the source of crushed sand is quarry. It is manufactured by crushing rocks or large aggregate piece into sand-sized particle in a factory or quarry. While river sand is naturally available and extracted from the river banks or river beds. M sand shape of crushed sand is angular and cubical and has a rough texture and hence better for concrete. While the river sand of shape of natural sand is rounded and has a smooth surface. M sand has no moisture content, while river sand has moisture is generally present between the particles.
M sand. The sand highly recommended for RCC purpose and brick block works. While river sand is recommended for RCC plastering and brick block work. M sand less damage to the environment as compared to natural sand. While this river sand is harmful to the environment, it is reduce the groundwater level. M sand price near about rupees 900 ton, while river sand price near about rupees 480 ton. Thank you. क्रशिंग ऑफ रॉक से एग्रीगेट बनाया जाता है फाइन Yes, sir. M sand. That one is crushing of rock. M sand, manufactured sand. नहीं दोनों ही है इन्वायरमेंट के लिए रिवर सैंड वो नेचुरल है वो हाई टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए नहीं क्वालिटीज वाइज क्वालिटीज क्वालिटीज M sand less damage to the environment as compared to natural sand. This river sand is harmful to the environment. It reduces the groundwater level. नदी से अगर ज्यादा बालू फेंका तो वहां का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा ठीक है इसलिए एम से हमको बनाना पड़ा नेक्स्ट ग्रुप आइए सर हम तो ग्रुप में बात किए अभी आगे सर मेरे से Yes, sir. Good morning, sir, and my dear friends. My name is Aman Kumar. I am present here to deliver my topic presentation of course aggregate. My topic is coarse aggregate. Coarse aggregate refer to irregular and granular materials such as sand, laver, crushed stone, and used making to concretes. In most cases, coarse is naturally
coarse is naturally occurring can be obtained by blasting quarries or crushing by hand or crusher. It is imperative to wash them before using them for producing concrete. Their angularity and strength affect the concretes is numerous way. Needs to say the needs to say that sectional of the aggregate is very important process. Classification of coarse aggregate on the basis of size. Material that are larger enough to retain on the size of 4.7 mm size is 4.7 mm Selvi size usually consist coarse aggregate can be used to can reach a maximum size 6.63 mm. The size of coarse aggregate afford several aspects of the concrete, mainly strength and workability of the amount of water needed for the concrete mixture. It also helps determine how fine aggregate is needed to produce concrete base. The bigger the size, the smaller the bondable surface area for the cement, sand, water, the less water and fine aggregate needed with concrete mixtures. Next topic is delivered by Swati. Good afternoon, all of you. Myself Swati Priya, and my topic is classification of aggregate on the basis of specific gravity. Specific gravity between 2.6 to 3.5 for natural aggregates influences strength and absorption of concrete. Low specific gravity, porosity, and therefore poor durability and low strength. Density greatly depends upon specific gravity. Classification of aggregate on the basis of shape and texture. Shape influences the properties of fresh concrete more than hardened concrete. Round and irregular aggregates are highly workable but yield low strength. Flaky aggregates require more cement paste to produce maximum watts. Angular shape is best. Shape and texture governs water requirement. Next. Good morning to everyone, respected teachers, and also to all my dear friends. Today, I, Rahul Raj, is standing in front of you to speak on the topic water absorption test for coarse aggregate. These tests help us to determine water absorption of coarse aggregate as per IS 2386 Part 3 1963. For this test, a sample is not less than 2000 grams should be used. Apparatus used for this test are wire basket, perforated, electroplated or plastic coated with wire hangers for suspending it from a balance. Watertight container for suspending the basket. Dried cloth, dry soft absorbent cloth 75 centimeter into 45 centimeter shallow tray of minimum 650 square centimeter area, airtight container of a capacity similar to the basket and oven. Procedure to determine the water absorption of aggregate. The sample should be thoroughly washed to remove final particles and dust, drained, and then placed in a wire basket and immersed in distilled water at a temperature between 22 to 32 degrees Celsius. After immersion, the entrapped air should be removed by lifting the basket and allowing it to drop 25 times in 25 seconds. The basket and sample should be remain immersed for a 24 and a half hours. Afterwards, the basket and the aggregate should be then removed from the water, allowed to drain for a minute. No, sir. Yes. The basket and aggregate should be. Sir,
sir. In the first step, wire basket perforated या electroplated और plastic coated wire hanger suspended from balance को ले लिए सर, और फिर water tight container for वाटर बास्केट वायर बास्केट लिए पहले। आपको स्टेप बताना है कि सबसे पहले हम उसको जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको निकालेंगे, किसके हेल्प से, बास्केट है इसके हेल्प से, जितने भी गंदा माटी है वो सबको निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद सर ड्राई क्लॉथ पे उसको रखेंगे। उसके बाद सर उसको ड्राई क्लॉथ पे रखेंगे और जो है पूरा वाटर को वहां पर सुखा देना है, और फिर उसके बाद जो है उसको 25 टाइम्स इन 25 सेकेंड जो है इमर्स करना है बास्केट में। देन द बास्केट एंड द सैंपल शुड बी इमर्स फॉर ए 24.5 आवर। उसको 24.5 आवर के लिए इमर्स करना है एग्रीगेट को बास्केट में। यस सर, सैंपल सर वाटर में इमर्स करना है, बास्केट में वाटर रहेगा उसमें इमर्स करना है। आगे सर द बास्केट एग्रीगेट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। वाटर से बास्केट में जो एग्रीगेट उसको बाद में रिमूव कर देंगे, फिर उसको ड्राई क्लॉथ पे रखेंगे और फिर जो है ना सर उसको सुखाएंगे। एक ड्राई क्लॉथ से फिर दूसरे ड्राई क्लॉथ में डालना है। उसके बाद फिर सर वेट ए करेंगे उसका, और फिर उसके बाद जो है उसको ओवन पे रखेंगे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 24 आवर्स। फिर उसके बाद उसका वेट भी करेंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला पर जो उसको पुट कर देना है, वेट ए माइनस वेट बी बाई बी इंटू 100%। इस फॉर्मूला पे पुट करके जो है इसका ये रिजल्ट को निकालना है। लिमिट कितना होना चाहिए, लिमिट कितना परसेंट से ज्यादा नहीं चाहिए, 0.60 कुछ से। एग्जांपल आप ऐसे होना चाहिए जो आप मीटिंग में या यूज करेंगे, हमारा कितना परसेंट से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता होगा। परसेंटेज नहीं, लेकिन ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, कम ही करना चाहिए। परसेंटेज कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लिमिटेशन से होगा, उतना ध्यान नहीं सर होगी। यस ठीक है। अब किसी को ये थैंक यू। करके 2 मिनट बता रहे चले जाते हैं। ओके सर। अगली बार से बोर्ड पर आपको उंगली दिखा करके बताना है। ओके सर। ठीक है। यस सर, टी शर्ट ही लेके आए हैं, शर्ट घर में ही है। यस सर, स्कूल यूनिफॉर्म लाए सर, लेकिन वो अभी देख रहे हैं छोटा हो गया है। आज पहने थे सर, लेकिन छोटा हो गया। नहीं सर। यस यस।
जैसे में सुने तो डीप नंबर होता है तो उसमें कोर्स एग्रीगेट को देते हैं टेस्ट करने के लिए सी का एंड क्या होता है वो है चलनी जो होता है सर फाइन एग्रीगेट को अगर सीविंग करते हैं ना फाइन टेस्ट निकालने के लिए कितना मिनट तक उसको सीव को सेकिंग करते हैं वैसे सर पता है कि चलो अच्छा बात एग्रीगेट जो है जो यूज करते हैं बिल्डिंग में उसका जो है ना शेप कैसा होना चाहिए राउंडेड होना चाहिए फ्लैट होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए क्यूबिकल होना चाहिए सेट होना चाहिए अच्छा बढ़िया होना चाहिए गोल गोल नहीं उतना भी कोर्स एग्रीगेट सबसे बेहतर होगा सर बेहतर सर मैन्युफैक्चर आजकल सुन रहे हैं सर मैन्युफैक्चर ज्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग में सब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं आर्टिफिशियल विंडो को क्रश करके और एक रिवर सेंड होता है जो बाबू जो नॉर्मली यहाँ पर लाइन से बेहतर है करो आप सेकेंड लाइन सेकंड लास्ट आप ये चार लाइन पढ़ो और बताओ कौन सा एग्रीगेट सही है चारों लाइन पढ़ो फटाफट पहला लाइन पढ़ो हां आप may influence over the properties of fresh concrete more than hardened concrete. Round and irregular aggregate are highly workable but low strength. Round and irregular aggregate are highly workable कराकर but low strength है इसका. लेकिन तो round and irregular जो है ना highly workable है but उसका strength low है. स्ट्रेंथ वर्केबल हाई है मतलब हाई वर्केबल है but ये उसका काम है सर उसका yield कम है. नहीं सबसे बेहतर एग्रीगेट कौन है बताइए किस स्टेप का एग्रीगेट सबसे बेहतर है पढ़ के बताइए सर राउंड इज सेकंड लास्ट एंगुलर स्टेप इज द बेस्ट एंगुलर क्या चीज एंगुलर स्टेप इज द बेस्ट हां एंगुलर स्टेप बेस्ट होगा अब बेस्ट को क्यों है सर वो सेट हो जाता होगा अच्छा से बाइंडिंग हो जाता होगा एक साइड हो ठीक है थैंक यू नेक्स्ट भाई Respected Professor and my dear friend, good morning to all of you. My topic is on brick, and here contents are brick introduction, composition of good brick, earth, quality of good brick, classes of brick, and types of brick. Introduction of brick. Brick are the building material used for making the wall pavement and brick structure and for the partition of room. It is block or single unit of ceramic material used for masonry construction. Now, composition of good earth brick. Good earth brick should contain 20 to 30% of aluminum for imparting good plasticity to brick. 50 to 60% of silica as it reduces the cracking, shrinking, and warping of raw brick, and in addition increase durability of brick. 5 to 6% of iron oxide for imparting the color to the brick. Very small amount of lime for preventing shrinkage. Small amount of magnesia for imparting yellow tint and reducing shrinkage. Now, quality of good earth brick. Bricks should be standard size, which are 190 into 90 into 90 mm and uniform. It must produce metallic sound when they are struck to each other.
Bricks should not absorb more than 20% of water by weight. They should have minimum of 5 into 50 Newton per millimeter square. They should be well burnt and have sharp edges. Colors should be uniform and bright. Now, next topic will describe Anand. Thank you, Saurabh. Respected professors and all my dear friends present here, a very warm good afternoon to all of you. And as my friend Pigment discussed the previous topics, now I am going to discuss the classes of bricks. Bricks, on the basis of their durability and its bearing capacity, have been divided into four types. The first class bricks that meet the ideal conditions that my teammate discussed in the previous slide. Let me remind it. Bricks should be of standard size. The first class bricks meet this criteria. They follow the standard size. They produce metallic sound, more metallic sound when they are stuck to each other. They do not absorb more water. In case of when we talk about the first class brick, it absorbs 20% of water by weight, and for the second class it is 20%. Sorry, it is basic. And they should have a minimum of 5.5 Newton per mm square strength. They should be well worn and have sharp edges. The first class brick follow this criteria. And when we talk about the second classes brick, they are comparatively less in quality. They have some lumps and they are non-uniform in shape. And their water absorption capacity is little higher. As we have, as I talked, it absorbs 22% of water. And when we talk about the third class of bricks, which is a little lesser in quality in compared to the second class of bricks, and they are overburnt. Okay, and fourth class are the cheap bricks. So we can from here we can say that the first class, second class bricks are used in wall partitions. When we create walls, we can use the first and second. We prefer the second and first class bricks. Whereas when we are constructing the roofs, we can prefer the fourth class bricks. They are cheap and they are uh, they are not capable of handling so much load, and their load bearing capacity is less. Okay, our next topic is the type of bricks. In this topic, we will see the traditional and modular bricks. Traditional bricks are the bricks that have never been standardized, whereas the standard size of these standard bricks are the bricks which have been standardized by the Bureau of Standards. Yes. Okay. So it is we initially discussed that the standard size of bricks, that its dimension is 190 mm, 90 mm, and 90 mm. Whereas in case of traditional size of bricks, it is 230 mm, 115 mm, and 75 mm. And here we reach the conclusion. Bricks are the building construction materials. Based on the quality, they are divided on the classes. They are divided in classes. Their compositions are alumina. Alumina is used in majority alumina and silica. Alumina is used for plasticity and silica for reducing the cracks. Okay. And for color, for reddish color, ferrous oxide Fe2O3 is used, and lime is used for preventing the shrinkage. But here comes the important point, that we cannot use the lime in excess, because if we use the lime in excess, it can cause the melting of bricks. Okay, and for yellowish tint, we use the magnesia. And here is the standard size of brick that I have already discussed. And we can also we also reach the conclusion that water absorption capacity, struck sound, metallic sounds, uniform and sharp edges, and these all the parameters affects the quality of bricks. And here are the references that I used for creating this slide presentation. Yes, sir. स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होगा? Yes, sir. मोटार विदाउट मोटार। साइड पे जाइए ना, वहाँ आप साइज ब्रिक का फिगर है ना। Yes, sir. The standard size of brick is 190 mm, 90 mm, and 90 mm. प्लीज मोटार। Sorry, sir, I have no idea. अरे टेक्निकल से बता दीजिए। Okay, sir. क्या साइज होगा? Yes, sir. 10 mm, sir. So it will be 200 mm, 100 mm, and 100 mm.
Sir, standard bricks are being standardized. Yes, sir. जो भी सर ऑफिस से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होते हैं उसमें नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक्स को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये जो है सर बीएस के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है, जबकि ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक्स जो है पहले यूज होता था, अब इसे कम यूज में लिया जाता है। Third line करिए। Sorry, second. It is not or single unit of ceramic material. क्या है क्या कौन सा material? Ceramic material. क्या सिरामिक मटेरियल जो कि सर लाइम कंटेन करते हैं। The materials that contains lime are known as ceramic materials, sir. Just like in case of we talk about the marbles, they are also ceramic materials. Marble, sir. Marble. They can be molded. Yes, sir. Yes, sir. सर मसाला just bending. Yes, sir. अच्छे से bind हो सकते हैं। इसका complete जो है वो shear forceful और अच्छे से bind और इसका डायमेंशन होता है ये होता है ये तो दो बंद करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पर उसको ये सब जलाया जाता है। हमारा ये स्लाइड ब्रिक वाले स्लाइड में तुमको ये ऐड करना होगा जो गवर्नमेंट के होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल की लाइक सब ऐड करना उसी का पार्ट है बर्निंग ऑफ ब्रिक। आज आपके जब ब्रिक में नेमिंग किया होगा, अगर फ्लैट में नेमिंग तो क्या होगा? वो नेमिंग करना क्या जरूरी है? कुछ लिखा हुआ है? Yes, sir. जरूरी है? नो सर, ये जरूरी नहीं है, बट नेमिंग करते हैं तो सर वो जब कंक्रीट के साथ करते हैं, प्लास्टर करते हैं तो सर वो बाइंड अप हो जाता है। जरूरी नहीं है। कंक्रीट के साथ करते हैं मोर्टार से। क्यों जरूरी नहीं? जरूरी तो नहीं है। सर तो जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी कंपनीज, वो सभी कंपनीज अपने अपने ब्रांड्स का नेम डालते हैं सर। सर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग के लिए सर। थैंक यू सर। Good morning, everyone. Respected teacher and my dear friends. Myself, Prince Kumar Singh, and Department of Civil Engineer, and my roll number 19137. Please. And now I am represented mortar and concrete.
and content, introduction of motor, classification of motor, and so on. Are now Priyaranjan and Prince. क्या सर? एक नहीं है सर. ठीक है सर. एंड मोटार होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो बिल्डिंग मटेरियल का होता है, फाइन एग्रीगेट का होता है और वाटर का होता है. होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि जैसे हम अपने किसी भी बिल्डिंग का एक पार्ट हम ले लें, उसमें अगर देखें तो जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो सेम रहे. यानी जो हम इसमें बिल्डिंग मटेरियल ले रहे हैं, इस सबका एवरेज सेम रहे. इसमें जो रेशियो होता है इसका सबका एवरेज सब सेम रहे. ठीक. बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो लाइम और सीमेंट का मिक्सचर होता है. और फाइन एग्रीगेट सैंड एंड सुर्खी का मिक्सचर होता है. जो सुर्खी होता है वो ब्रिक पाउडर होता है. सैंड जो होता है वो कॉमनली रॉक्स एंड मिनरल पार्टिकल का जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं सैंड. सैंड जो होता है वो कभी भी अपना डायरेक्टली उसका जो इंक्रीज नहीं कर सकता अपना स्टेबल. क्या सर? सर क्या सर? हिंदी में सर. सर अपने सर खुद सर समझने के लिए सर. हाँ सर. जो सैंड होता है वो खुद डायरेक्टली किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज नहीं कर सकता. वो ग्रेन टू ग्रेन जब तक अटैच नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकता अपना. यूज ऑफ मोटार तो सबको मालूम ही होगा कि यूज ऑफ मोटार कहाँ होता है. जैसे दो ब्रिक होता है उसको जोड़ने के लिए यूज ऑफ मोटार का यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट निरंजन रॉय. Good morning, respected teacher and dear friends. Myself, Priyaranjan Kumar, roll number 19139. Types of motor. There are 5 types of motor: cement motor, lime motor, surkhi motor, wedge motor, mud motor. Cement motor. Sand plus cement plus water equal to cement motor. सीमेंट मोटर होमोजेनियस पेस्ट होता है ये, जिसमें सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर को एक इक्वल रेशियो में मिलाते हैं. हाउ टू मेक सीमेंट मोटर. सीमेंट प्लस सैंड तो इसको 1:3 रेशियो में मिलाते हैं, तब ये मतलब कि when mixed of cement and sand ग्रेजुअली मिक्स वाटर. इसको अच्छे से सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर को एक अच्छे रेशियो में मिलाते हैं तो ये अच्छा सीमेंट बनता है. लाइम मोटर. कंपोजिशन ऑफ लाइम एंड एग्रीगेट सच एज सैंड मिक्स विथ वाटर. सुर्खी मोटर. लाइम प्लस सुर्खी प्लस वाटर. लाइम में एमोर्फस का वो क्वालिटी रहता है, तब ये सुर्खी मोटर बनता है. ड्वेज मोटर. लाइम मोटर प्लस सीमेंट मोटर, इसको 1:6 रेशियो में मिलाते हैं. मड मोटर इज मेड बाय एडिंग एंड क्ले इन सच प्रोपोर्शन that when they mix with water there should not be any crack after drying. मेरा टॉपिक चेंज है ना सर, तो कंक्रीट. कैसे बनाया सर? मतलब कहीं से डायरेक्ट अभी काउंट कर रहे हैं? नहीं सर, वो अपने से पढ़ कर बनाया था सर अपने से. वो जो क्या सर? जी हो गया सर. उनको थोड़ा सा
सुर्खी मोटार सर जो होता है ना सर, ईंट का सर पाउडर होता है सर, उसको सर तोड़ के सर उसका यूज सर पहले होता था, अभी सर ना मात्रा के बराबर होता है सर, अभी सर बहुत कम होता है सर। पहले सर दीवार जोड़ने के लिए सर आसपास में कहीं जो है हाँ हाँ सर देखिए, हाँ सर लकड़ी कोला में सर है, देखिए सर। सुर्खी मोटार है। जैसे सर ईंट का ही होता है, लेकिन उसमें सर लाइम भी ऐड होता है उसमें सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर है सर, बहुत सर दिख जाएगा सर लकड़ी कोला। सर लकड़ी कोला में सर है सर, जहाँ पे मार्केट लगता है ना, डायरेक्ट इस साइड में देखिएगा सर, सुर्खी मोटार से ही सर बनाएगा सर। कोई सर ओनली यूज जैसे होता है ना सर, ओनली यूज रिवर्स सर सेंड लिखना सर, रिवर्स सेंड सर लिखना सर, रिवर्स सेंड सर केवल यूज कर सकते हैं सर अपने सर बिल्डिंग जो बनता है। हाँ सर, नहीं सर, सॉरी सर, आप खुद से लिखे ये सर खुद से सर, नहीं सर खुद से लिख दी सर। बना सकते हैं 5 मिनट बनने के लिए ऐसा स्लाइड आपसे बन जाएगा। हाँ सर बना देंगे आप अभी जानने के बाद वो स्लाइड बना करके ठीक ठीक है सर, ठीक है सर बिल्कुल। सिवल सर को भेजना है, अच्छा ठीक है सर आप जी। सर जब मड मोटार बनाते हैं तो यह सूखने के बाद मतलब इसमें क्रैक नहीं करता है। क्या मोटर होता क्या है? देखें ना कहीं नॉर्मल आप कहीं देखें मोटर ये सर देखिए, अरे इलाका और तो घर जोड़ते हैं, मिट्टी पर तो जोड़ते हैं, Yes, sir. मिट्टी का वो कीचड़ लगा वो मोटर ना Yes, sir. और किस कीचड़ हाँ Yes, sir. और सुर्खी मोटर जो है वो रिस्टोरेशन, जैसे कि कहीं पीएसआई का देखना कि यहाँ पे रिस्टोरेशन वगैरह चल रहा है पहले का, जैसे जाना भी यहाँ तुम तलाव में जो है पूजा से ना विश्वविद्यालय है ना, तो उसका जो रिस्टोरेशन हुआ है पूरा, उसमें सुर्खी मोटर यूज करते हैं। रोड में सर सुर्खी का सर रोड बनता है, वो अलग है, वो पूरा रिस्टोरेशन पर्पस में सुर्खी मोटर यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंट मोटार जो है इसमें बाइंडिंग मटेरियल कौन सा लाइन होता है सर, सीमेंट होता है सर, सीमेंट मोटार नहीं सर, सीमेंट मोटार बना है किस चीज से ये बताइए। चलिए मतलब अब जो बना है सीमेंट वाले स्लाइड है सीमेंट मोटर वाले, हाँ सीमेंट मोटार क्या लाइन के पीछे जाओ एक बार जाओ, पीछे लाइन ना सीमेंट वाले सीमेंट मोटर सीमेंट और क्ले प्लस लाइम सर, क्ले और लाइम सैंड प्लस वाटर प्लस सीमेंट। पानी रखेगा बात कौन सकता है लास्ट प्रेजेंटेशन में बोले थे बाइंडिंग मटेरियल कौन है वाटर वाटर है बाइंडिंग मटेरियल सैंड है सैंड सर, सैंड जैसे वाटर होगा
सीमेंट होगा सर, क्योंकि सर उसमें बालने की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। कौन सा प्रॉपर्टी पानी को पूरी करता है? सीमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है एलिमेंट जो है ये रहता है पानी को पूरी लेता है, पानी को पूरी लेता है। कौन बता सकता है इसमें सीमेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है? Good afternoon to everyone. Thank you, Priyaranjan, for your explanation. Now I will explain about the concrete. The concrete can be defined as the composite material composed of the binding medium such as the mixture of cement, water, and the different fine and coarse aggregates. Cement and lime are generally used as binding materials, whereas sand cinder is used as fine aggregates, and crushed stones, broken bricks, clinkers are used as coarse aggregates. Now we discuss about workability of concrete. The workability of concrete is the amount of work required to place concrete and to compact it thoroughly. Workability of concrete increases with the addition of water, but it reduces the strength. That's why it's not a desirable way of increasing the workability. The use of aggregates which are round and have smooth surfaces increases the workability. Workability of concrete is better determined by compaction factor test. Here are some different methods of test of workability of concrete. The first one is slump test, second one is compacting factor test, third one is flow test, fourth is VB consistometer test, and the last one is Kelly ball test. Thank you, sir. Sir, कंक्रीट को यूज करने में कितना मतलब आसानी होता है उसको वर्कएबिलिटी बोलेंगे, वर्क मतलब जनरल पर्पस में। जी सर, जी हाँ, प्लेस करने में सर। यस सर, मतलब यूज करने में जो वर्कएबिलिटी में इजी होता है वो। जी सर, कैसे पता करें कि वर्केबल है या नहीं है? स्लिम टेस्ट। The different methods of test of workability of concrete. Sorry sir. है सर, बट उसका तैयारी नहीं है ना, इसलिए नहीं बोले वो। नहीं सर, बस ये 3 काम तैयारी। जिस किसका सर? नहीं सर, नहीं। सर एंगुलर देगा, वर्कएबिलिटी सर राउंडेड देगा, क्योंकि सर क्योंकि वो मिक्स होने में आसानी होगा इसलिए। जी सर, स्मूथ वो सरफेस प्रदान कर देगा, मतलब देगा। नहीं, वर्कएबिलिटी बढ़ेगा सर, लेकिन उसका हाँ स्ट्रेंथ घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा सर। सर एक्चुअली ना लास्ट टाइम पे थोड़ा वो हो गया, कंफ्यूजन हो गया तो। जी सर, नो आइडिया सर। ठीक है सर, थैंक यू।
Respected teachers and my dear friends, a very good afternoon to you all. Myself is Sir Rishu. Sir, दोनों ऋषभ है। सर राकेश। My name is Sushant Kumar Saha, standing in front of you to present today's presentation on building stone. So, first of all, we will discuss about the content that we are going to discuss today. So, the first thing is classification of stone. The second thing is test for stone. And the third, we will discuss the qualities of good building stones. So, let us start with the introductory part. So, before going to the building stone, we will discuss about the stone. So, the stone is a natural material of construction, as we all know. And the stone which is used for construction of engineering structures is known as building stone. Man has been using stones for very ancient time for construction, foundations, wall, pillar, beam, floor, roofs, etc. As you will see around the globe, we will find out some of the very famous structures like pyramids of Egypt, the Great Eiffel Tower, Taj Mahal, Great Fort, and the Great Wall of China are some of the historical buildings that we will find around the globe. And the very good thing about the stone or the building stone, you will see that they are natural and they do not require any kind of manufacture. So we will discuss now the classification of stones. So the first classification is geological classification. So it depends upon the geological formation of rocks. Stones are classified as igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. So what is igneous rock? So these are formed by the cooling of molten lava. When this lava becomes hard on cooling, it forms igneous rock. These rocks are durable, hard, massive, and stronger than any other rocks. Second, sedimentary rock. These are formed by the decomposition of sediments due to the action of air and water. Due to the high action of high-speed wind and heavy water, igneous rocks are disintegrated and deposited in layer on the earth's crust and form sedimentary rock. Metamorphic rock. So, metamorphic rock is quite interesting because these rocks are either sedimentary or igneous, whose physical and chemical properties are changed due to the action of high temperature and pressure. So these are some of the igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. Second, chemical composition. So this classification is done on the basis of dominant chemical composition. These are the following chemical classifications of rock. The first is siliceous rock. These rocks have silica as a predominant composition, that is more than 50% of bulk composition of the rock. Naturally, they are classed among the strongest type of building stone. Some of the examples are granite and sandstone. As you can see here, this, the siliceous rock, this is granite. Second one, this rock, siliceous rock. These rocks have dominant composition, carbonate, generally a calcium, but often with the magnesium as well. Examples are limestone and marble. The third is Algerious rock. They are most sedimentary rocks having clay as a dominant constituent. They are invariably soft and untrustworthy as building stone. So, as a civil engineer, you have to consider this fact that this is one of the weakest rock you will ever get. Because, so do not consider this rock as any kind of manufacturing or any kind of construction. The very common example of Algerian rock is clay stones.
So I would like to proceed for the next slide to my next teammate, Rishabh. Good afternoon, teachers and my dear friends. Rishabh, one for one. We will discuss about physical classification of stone. Depending upon physical classification, rocks are classified into two groups, namely stratified and unstratified stones. Stratified stones are derived from sedimentary rocks. These stones are found in layer one above another. Limestone and sandstone are the stratified stone. Unstratified stone. These stones are not saw any type of layer. Granite, granite, marble, trap, etc. Unstratified stones. These is the pictures of stratified and unstratified stones. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Myself, Rahul Kumar. I will discuss about test for a stone. Good afternoon, everyone. Myself, Rahul Kumar. I will discuss about test for a stone. First, crushing a stone. This test is done to determine the compressive strength. Procedure: take a stone cube of size 40 mm into 40 mm into 40 mm. Sir, yes, we work for 72 hours, including structure covered by the deep depth and plywood product. Axially load applied in crushing test machine. Crushing strength is equal to maximum load at sample crush on area of bearing surface of crushing. सर समझा एक क्रशिंग टेस्ट का और आपका क्यूब का साइज 40 mm है और क्रशिंग टेस्ट के लिए हम एक प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लाईवुड लेंगे आधे mm का तो और मेरा स्टोन है क्रशिंग है इसके थ्रू 40 इस पे लोड लगा है सर 40 न्यूटन पर एमएस पर कौन सी का टेस्ट सर इसका स्टोन का टेस्ट कर रहे हैं उसे क्या फाइंड आउट करते हैं जो टेस्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट कौन सा स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव यहाँ लिखिए वो क्रशिंग टेस्ट सर क्रशिंग टेस्ट क्रशिंग और वो कंप्रेसिव सर क्रशिंग टेस्ट एक पूरा प्रोसेस है सर और जो मशीन में करते हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं नेक्स्ट है अल्ट्रेशन टेस्ट दिस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ wear of a stone procedure sample of a stone broken in 60 mm size in piece such pieces weighing 5 kg and put cylinder of double alteration test machine diameter and length of cylinders are 200 mm and 340 mm. Cylinders are closed and their axis make an angle 30 degree with horizontal. Rotate about horizontal axis for 5 hours at the rate 30 rpm. After this content, take a specimen and pass through 1.5 0. Wear percentage is loss in weight upon initial weight into 100. Sir, the devil electricity machine है इसमें 2 सिलेंडर लगा हुआ है इसमें आप लोड डालेंगे जितना भी केजी का है मान लीजिए 5 केजी का है इसमें 5 केजी डालेंगे उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली टिल्ट करेंगे 30 डिग्री पे उसके बाद इसको रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टली उसमें वो कीड़ा डालेंगे
स्टोन डालेंगे और क्या डालेंगे। और सी में उसके बाद जल्दी उसको जो नीचे पाउडर बच जाएगा वो आपका वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज डन टू चेक how much water the stone may absorb. Procedure: take 50 gram of a specimen cube and dry at 100 to 100 degrees Celsius for 24 hours. After cooling, weight is noted. W1 cube is immersed in distilled water at 20 to 30 degrees Celsius for 24 hours. Then cube is taken out and remove surface moisture with cloths and weighted. W2 percentage of water observation is equal to W2 minus W1 upon W1 into 100. सर इसमें हम लोग स्टोन को डालें। सबसे पहले स्टोन को हम डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद कूल करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाल्टी में हम डालेंगे पानी में स्टोन को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको निकालेंगे स्टोन को। उसके बाद इसके द्वारा W1 पहले वाला स्टोन होगा। उसके बाद जब पानी में हम डालेंगे इसको निकालेंगे तो W2 बनेगा। क्या सर? पहले जो 5 केजी लिए है ना सर, यहाँ पे 50 ग्राम है ना, उसको W1 मानेंगे और उसके बाद इसके बाद जो पानी से निकालेंगे उसको W2 मानेंगे। हाँ क्या सर? वेट W2 का वेट बढ़ जाएगा सर। सर वो सब वाटर ऑब्जर्व कर जाएगा। Good afternoon to respected teachers and my dear friends. I am Raj. Now I am discussing property of good building stones. Flowing are the properties of good building stone. Strength. The strength of stone must be able to resist the applying load or overcoming load. The stone we used in building material, उसमें इतना सर क्षमता होना चाहिए कि जो लोड है उसको रेसिस्ट कर सके और सह सके। Second is durability. Stone must stay in all climatic conditions and resist all the natural destructive effects. It lasts for long time. Durability. Durability is also important thing. कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो उसका ड्यूरेबिलिटी को भी हम लोग कंसीडर करके लेते हैं। ऐसा नहीं ना कि इसको एक दिन के लिए यूज करना है। तो ड्यूरेबिलिटी में कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी, टेम्परेचर चेंजेस, एसिड रेन, ये सारा चीज को वो रेसिस्ट कर सके और उसमें विथ स्टैंड कर सके, उसको भी देख के हम गुड बिल्डिंग स्टोन्स का चॉइस करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव. If stones are locally available, it reduces the transportation cost. Also, the dressing and polishing cost of stones should not be high. Cost is also a very mandatory thing. If cost is high, it is tough to use because because building is so large, and while you use more money used, that's why cost is also a very mandatory thing. We also take consideration of cost. ऐसा नहीं हो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए सामान के चक्कर में, इसलिए कॉस्ट को भी इफेक्टिव रखना है जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट एक इफेक्टिव रेंज में प्रिपेयर हो जाए। ड्रेसिंग का मतलब सर, सॉरी, क्वायरिंग का मतलब सर उसको सर स्मॉल पार्ट में। Appearance. The appearance of a stone must be aesthetic and could show that a requirement of polish and interesting not needed, which decrease the cost of operation. Appearance उसका अच्छा होना चाहिए। Hardness and toughness. It should be enough strong and hard to withstand all the stress applied due to seismic force, wind load, and a load of the superstructure. स्टोन, गुड स्टोन का ये क्वालिटी होना चाहिए, वो इतना कम से कम हार्ड होना चाहिए कि अप्लाइड स्ट्रेस जो कि सिस्मिक वेव के कारण डेवलप हो या फिर विंड लोड, विंड प्रेशर के कारण डेवलप हो या फिर सुपर स्ट्रक्चर के कारण डेवलप हो, उसको वो रेसिस्ट कर सके और उसमें वो विथ स्टैंड कर सके। वाटर एब्जॉर्बेशन.
We know that all the stones are more or less porous in nature, but for a good building stone, percentage of water absorptions by weight after 24 hours should not exceed by 0.6. सर नेट से नहीं सर 0.6 पर 0.6 यस सर सॉरी सर थैंक यू हैव अ नाइस डे लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सर एक स्ट्रक्चर का जो लोड है सर वही सुपर लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हो गया सर कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसका दो पार्ट। जी सर पहला पार्ट सब स्ट्रक्चर होता है, दूसरा पार्ट सुपर स्ट्रक्चर। इसको इसी बिल्डिंग किसको सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे, किसको सब सॉरी सर आप बता सकते हो सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कौन सा पार्ट सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा? कौन सा पार्ट सब कहाँ से कहाँ तक? टॉप तो समझ रहे हैं, टॉप मतलब छत भी होता है, टॉप इसको कह रहे हैं ऊपर में जो होता है ना, जो बिल्डिंग के ऊपर का होता है, इसके बाद मिट्टी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मिट्टी के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर वाला पोर्शन तो होता ही होगा क्या? सर जो होता है सर मिट्टी के ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर और मिट्टी के नीचे जो स्ट्रक्चर है सब स्ट्रक्चर लेवल होता है, फाउंडेशन लेवल होता है, फाउंडेशन लेवल होता है। फाउंडेशन लेवल अच्छा ऊपर ये जो है, ये जो लेवल है नीचे वाला, खिड़की का नीचे वाला लेवल को कौन सा लेवल होता है? कौन बता सकता है? चलो सब हाँ अगर न्यूटन लेवल हुआ, न्यूटन लेवल से नीचे कौन सा तो सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा ऊपर से नीचे सर रॉक में जो सबसे ज्यादा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ना, वो उसका डोमिनेंट कॉम्पोजिशन। यस सर, एज अ प्रीडोमिनेंट कॉम्पोनेंट सर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है वो, मतलब अधिकतर मोस्ट पोर्शन वो कवर करके रखा होता है, दैट इज प्रीडोमिनेंट। एज ए डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, आर्टिकल रॉक जो लिखे उसमें बता रहे हैं कले है प्रेजेंट एज ए डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये हुआ इसमें कले की जो परसेंटेज हो ज्यादा है। हां लेकिन परसेंट यस सर, हार्डनेस और टफनेस जो लिखे हुए इसमें वो हार्डनेस क्या डिफरेंस है? सर दोनों सेम ही लगता है। नो सर टफनेस मीन सर स्केच करने पर सर अगर किसी हार्ड कोई भी सर शार्प ऑब्जेक्ट है सर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर स्केच करेंगे सर, अगर सर मार्क नहीं हुआ तो सर टफ। कौन सा वैल्यू निकलता है टफनेस से पता है? नो सर हम जो अभी बता रहे थे ना वो हार्डनेस का तो पता है। यस सर टफनेस नहीं पता है। टफनेस का टफ सर कोई लोड को सर रेसिस्ट कर सके टफ। जैसे कैसा लोड, ग्रेजुअल लोड, इंपैक्ट लोड, सॉरी सर इसका टेस्ट भी तो करते हैं इंपैक्ट पे हो गई ठीक है। कौन सा दूसरा नंबर था?
वो रिकॉर्ड होगा सर। Good afternoon, respected teachers and my all dear friends. My name is Amol Kumar. My roll number is 19149. My team member is Amrit Raj Gupta, Ashish Kumar, and Nitesh Kumar. Presented on timber. Content: Introduction to timber, procurement of timber, qualities of good timber, structure of tree, and defect of timber. Timber is a wood used for building or for the engineering purpose. Timber is the one of the primary material for engineering construction from the very earlier time. Common application of timber: building, construction, railway, agriculture. टिम्बर जो होता है ना सर, जैसे पेड़ है, उसको पेड़ को काटे और उसके बाद उसका वुड को बिल्डिंग और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम टिम्बर कहते हैं। टिम्बर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत पहले से ही प्राइमरी मटेरियल माना गया है। कॉमन एप्लीकेशन टिम्बर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे और एग्रीकल्चर। This figure is called timber. There are over 150 species of timber which are produced in India. There are about 46 main timber companies and more thousand small timber companies in India. In India, some common trees used for supplying timber are babul, banyan, bamboo, deodar, elm, coconut, mahogany, mango, palm, pine, and etc. Next topic will be explained Amrit Raj Gupta. Good morning, respected teacher and my dear friends. My name is Amrit Raj Gupta and now I am going to explain about qualities of good timber. एक अच्छे timber में क्या-क्या qualities होनी चाहिए? It should be sweet to smell when freshly cut. जब timber को काटा जाता है तो उसका smell से sweet type से मतलब होना चाहिए. It should have the property of elasticity to regain its original shape after removal of loads. इसमें टिम्बर, एक अच्छे टिम्बर में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके कारण वो उस पे से लोड हटाया जाए तो वो अपने शेप को पुनः रिगेन कर सके। इट शुड हैव ब्राइट अपीयरेंस विथ ए सिल्की लस्टर व्हेन प्लेंट। जब इसको प्लेंट किया जाएगा तो इसका ब्राइट अपीयरेंस, सिल्की लस्टर मतलब हल्का चमकीला टाइप से होगा। इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरेबिलिटी टू रेसिस्ट अटैक ऑफ फंगी एंड वर्म्स। फंगी एंड वर्म्स से मतलब इसको रेसिस्ट करने के लिए ड्यूरेबिलिटी का प्रॉपर्टी इसमें मतलब होना चाहिए एक वुड टिम्बर में। A good timber will always be heavy weight. A heavy weight timber indicates their good strength and sound quality. एक अच्छा टिम्बर हमेशा हैवी वेट का होगा, जिससे कि हैवी वेट उसको इंडिकेट करता है कि मतलब वो उसमें गुड स्ट्रेंथ एंड साउंड क्वालिटी अच्छा है। A good timber should be strong for working as a structural member such as beam and or column. एक good timber को मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि वो बीम और कॉलम के फॉर्म में भी मतलब वो काम कर सके। ए गुड टिम्बर शुड बी कैपेबल फॉर रिटेनिंग द शेप ड्यूरिंग सीजनिंग। सीजनिंग के जब टिम्बर का सीजनिंग किया जाता है उसके दौरान उसका शेप में कुछ चेंज होता है, लेकिन जो गुड टिम्बर होगा वो अपने शेप जो चेंज होगा उसको फिर रिगेन कर लेगा। इट शुड हैव ए स्ट्रेट एंड क्लोज्ड फाइबर एंड हैव रेगुलर एनुअल रिंग्स। इसका जो कटिंग करेंगे तो उसके शेप में सर स्ट्रेट एंड क्लोज्ड फाइबर ही होगा और मतलब उसका एनुअल रिंग टाइप से मतलब उसका दिखेगा जब कट करेंगे तो। और द कलर ऑफ टिम्बर इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। टिम्बर का जो कलर होता है वो उसके स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट्स करता है। इफ द कलर ऑफ टिम्बर इज डार्क इट इंडिकेट्स हाई स्ट्रेंथ। अगर टिम्बर का कलर डार्क है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टिम्बर में ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ है। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सप्लेन्ड बाय आशीष कुमार। Good afternoon, everyone. My name is Ashish Kumar. My topic is structure of tree.
Structure. First part is pith. The innermost central portion that contains entire cold tissue is called pith. It is also called pith or medulla. And next component. Pith is center part. Center part of the pith. And the next component of the hardwood. The annual ring that surrounds the pit are called as hardwood. Huh? Hardwood. Hardwood होता है पीठ पे पानी पानी का पानी ये नशा डार्कनेस होता है इसका कलर जो होता है डार्कनेस होता है and next component is the sepu. The few outer angular ring are called sepu. Cambium layer. The thin layer between the dark bark and sapwood is termed as cambium layer. Medullary layer. These are vertical layer are cellular tissue and are thin radial line from pith linked to the cambium layer. Bark. Bark is the outermost cover or skin of the tree. Bark is the two types, inner bar and outer bar. Thank you. Next topic is the details. Good afternoon to respected professor and all my dear friends. My name is Nitesh Kumar. My roll number is 19153. My topic name is defect of timber. There are three main groups of timber defect. First, natural defect. Second, seasoning defect. Third, conventional defect. Natural defect. Seasoning defect. Conventional defect. Conversion defect. First, natural defect are two types. Wind defect cracks. If the wood is exposed continuously to the high speed winds, the outer surface shrinks and forms cracks externally, which are called the wind cracks. Second, in timber, sects are the nothing but cracks which separate the wood fiber, practically completely different sec and formed in different conditions such as cup sec, heart sec, ring sec, star sec, radial sec. Figure sir नीचे. Second types of seasoning defect is bow defect, cup defect, twist defect. Bow defect जो होता है सर फ्लैट कोई टिम्बर है सीजन चेंज के कारण सर दोनों तरफ से दोनों एंड से ऐसे मुड़ जाता है उसको सर बोलते हैं बॉड डिफेक्ट. कप डिफेक्ट जो सीजन चेंज के कारण कोई फ्लैट टिम्बर. सीजनिंग डिफेक्ट सर जो सीजन चेंज होता है उसके कारण डिफेक्ट होता है टिम्बर में इस सीजन में. ये बॉड डिफेक्ट, कप डिफेक्ट, ट्विस्ट डिफेक्ट. सीजन चेंज सीजनिंग मतलब सीजनिंग डिफेक्ट सीजन चेंज करके सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग क्या होता है? पीछे 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 वही सर सीजन चेंज पीछे स्लाइड लगे पीछे सर सीजन चेंज होने की वजह से सीजनिंग होता है और पीछे सीजनिंग सर सीजन में परिवर्तन होता है उसके चलते डिफेक्ट होता है. सीजनिंग डिफेक्ट नहीं सर सर खत्म हो जाएगा ऐसा बोल दो खत्म कर दो वीडियो हो गया खत्म ये समझा रहा था तो डिफेक्ट हो गया सर. ट्विस्ट डिफेक्ट जो दोनों तरफ से मतलब डिफेक्ट होता है वैसे डिफेक्ट जो दोनों से मतलब मुड़ जाता है एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज तो उसको सर ट्विस्ट डिफेक्ट वो हो गया वो यस सर जो दोनों एंड से सर मुड़ जाता हो वो हमें उतना नहीं पता सर. यस सर सारा हो गया यस सर. अब आ जाओ पहला स्लाइड.
ठीक है पहले क्वेश्चन कर लो। बताओ मेरे के बाद मान लो टिम्बर को ना मेरे को कट करना है, ठीक है, हम ऐसे कट करना चाहते हैं कि सर ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, कैसे करेंगे? रिजिडी करेंगे ये क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐसे काट देंगे, कैसे काटेंगे? बड़े हो कोनिकल। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन बताओ। एक टिम्बर का ना मेरे को एज निकालना है, कैसे निकालेंगे? एज उस पर डिपेंड करता है कि रिंग पे डिपेंड करता है। रिंग पे कैसे रिंग होगा उस रबड़ होता है उस पे तो कौन सा रिंग निकलता है? एक रिंग था अभी फिगर में था, जितना रिंग होगा चलता है सॉफ्ट वुड और हार्ड प्लाईवुड सर, ये सॉफ्ट वुड है। प्लाईवुड वुड है। सही कौन सा होता बताओ दोनों में? पेड़ से काटते हो मतलब कौन सा होता? बता कुछ पढ़े हो? अच्छा प्लाईवुड कहाँ से काटते हो? इस पेड़ से। इस पेड़ से तो बनता है, बनता है ना, मैन्युफैक्चर्ड वुड है। जब मैन्युफैक्चर्ड वुड है तो सॉफ्ट और हार्ड वुड ना है सर, कोई भी वुड तो वुड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। चार वुड का नाम बताओ, चार वुड का नाम बताओ। क्या नाम था? बंबू, कोकोनट, शीशम हो गया, सागवान हो गया। ये सर कौन सा शीशम सागवान से कौन सा कैटेगरी में आएगा? हार्डवुड या हार्डवुड? हार्डवुड यस। दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना हार्डवुड और सॉफ्टवुड। सर हम लोग का टॉपिक टिम्बर है सर। ठीक है टिम्बर का ये बेटा। यस सर, उसी में है सर। सर क्या सर? रेलवे स्लीपर्स जो होता है हार्ड सागवान बम्बू नहीं सर, ये सॉफ्ट स्टिक बर्गर बनता है। एक और धीरे धीरे। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय सीजनिंग? सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग एक प्रोसेस सर जिसमें सर वो टिम्बर को सर काट के जब लाते हैं ना सर तो उसमें से ड्राइड होता है और मॉइस्चर रहता है, सब उसको हटाने का प्रोसेस जो है उसको सीजनिंग कहते हैं। समझे जी? समझे तुम सीजनिंग किसको कहते हैं? सीजन चेंज होने के सीजनिंग नहीं होता है। पता चला गर्मी से ठंडा हो गया सीजनिंग हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और सर जो गुड टिम्बर होगा उसमें मतलब मॉइस्चर और वो नहीं के बराबर होगा सर। मेरा क्वालिटीज ऑफ टिम्बर है उसी पे तैयारी करके आया। चलो और सर नाम देखो, एग्जांपल देखो गुड चलो आगे अच्छा ये जो पहला पॉइंट लिखे हो स्वीट टू स्मेल मतलब क्या होगा? मीठा लगना चाहिए? नहीं सर, जिसका मतलब फ्रेश लगना चाहिए सर, वो जो काटे ना सर तो उसका स्मेल कहाँ से निकलता है सर? ये लिखा है सर। कहाँ से लिखे हो? गूगल से। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। सर मतलब किसी चीज को मतलब टिम्बर को काटेंगे सर उसका स्मेल मतलब अच्छा मतलब स्वीट मतलब यस सर स्वीट और सर इसमें इलास्टिसिटी। ये अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट है। सर ठीक है जी।
Group 9. 9. Yes. Good afternoon. My name is Ravi Shankar and I am here to present the topic asphalt, bitumen and tar. My teammates are Tribhuvan Kumar, Ashish Kumar and Kausalendra Kumar. These are the content which we are going to discuss in this presentation. Asphalt. The asphalt is a mixture which consists alumina, lime, silica and asphaltic bitumen. At low temperature it is in solid state and at high temperature it is in liquid state. These are the forms of asphalts: cutback asphalt, asphalt emulsion, asphalt cement, mastic asphalt. Cutback asphalt. The cutback asphalt is in liquid state. Asphalt is dissolved in a volatile solvent to get this cutback asphalt. It is used for manufacturing bituminous paint, repairing roof, etc. Asphalt emulsion. Asphalt emulsion is obtained by adding 50 to 60% water to asphalt in presence of 1% amplifying agent. Amplifying agent forms waterproof film when water evaporates, so it can be used in cold condition. Asphalt cement. Natural asphalt is subjected to high pressure air under high temperature to get asphalt cement. Asphalt cement is plastic in nature and it is used for flooring, roofing, waterproofing material, etc. Mastic asphalt. Mastic asphalt is obtained by heating natural asphalt with sand and mineral fillers. It is impermeable method, does not contain any voids. The next topic will be discussed by Mr. Tribhuvan Kumar. First of all, good afternoon to sir and my dear friends. Today I discuss this topics bitumen. सबसे पहले हम जानते हैं bitumen होता क्या. Bitumen is obtained by the partial distribution of Q petroleum. Yes, Q petroleum. जब Q petroleum को partial distillation किया जाता है, उसका जो final waste product बचता है, उसी को हम bitumen बोलते हैं. It is also called as mineral tar and is present in asphalt also. यह जो है मिनरल टार और एस्फाल्ट में भी प्रेजेंट होता है और यह जो मिक्सचर होता है उसमें 87% कार्बन, 11% हाइड्रोजन एंड 2% ऑक्सीजन मिक्सचर होता है. नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्म्स ऑफ बिटुमेन. कटबैक बिटुमेन, बिटुमेन इम्यूल्सन, प्लास्टिक बिटुमेन, ब्लॉन्ड बिटुमेन और स्ट्रेट रन बिटुमेन. पहले हम जानते हैं कि कटबैक बिटुमेन क्या होता है. Cutback bitumen is obtained from the distribution of asphaltic bitumen with the addition of coal tar or petroleum. जब हम एस्फाल्ट में कोल टार और पेट्रोलियम को मिक्स करते हैं तब हमारा कटबैक बिटुमेन प्राप्त होता है. तो कटबैक बिटुमेन कैन बी यूज्ड एज पॉइंट ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशन. इसका जो है पेंट के लिए भी यूज किया जाता है जो कि कोल्ड वेदर कंडीशन में करते हैं. सेकेंड हैंड बिटुमेन इम्यूल्सन. बिटुमेन इम्यूल्सन इज obtained by dissolving very finely divided bitumen in aqueous medium. Suitable stabilizing agent are added to his solution. Next slide है plastic bitumen. Plastic bitumen majorly contain inert filler about 40 to 45% and bitumen as inner is the other material. It is used as sealing material for leakage, cracks in masonry structure etc. Fourth है blown bitumen. Blown bitumen is a specific type of bitumen. It is manufactured by subjecting bitumen to air under heavy pressure at high temperature. It can be used as damp proofing material, heat insulting material etc. And last is state run bitumen. State run bitumen is obtained by the distillation of bitumen into defined viscosity. It is also available as rocks. जो clear rocks में अंतर पाया जाता है state run bitumen. Thank you. And next topic discuss my team member Kausalendra Kumar. Start. Hi friend and respected sir. Good afternoon to all of you. I am Kausalendra Kumar and my roll number 1 and 151 and my branch is civil. Thank you Tribhuvan for your better explanation. Now we will discuss about tar. Tar is a high viscous liquid which contain a high amount of carbon content. It is used for laying surface layer for pavements, pressuring, wood etc. Forms of tar: coal tar, wood tar, mineral tar.
Coal tar is the byproduct obtained during the production of coal gas. It used for pressuring timber line, macadam woods, etc. Wood tar is obtained by the distillation resinous woods like pens, etc. The distillation of resinous wood provides the processed while which has very good preservative properties, so wood tar is well suitable for preserving wood. Mineral tar is produced by the explanation of corrosion are generally obtained from bituminous shells which are nothing but rocks. Volatile content of mineral tar is very less. And the next explanation by Ashish Kumar. Good afternoon, my research sir and my friends. My topic is testing of bitumen, softening point test. Softening point denoted the temperature at which bitumen attain the particular degree of softening under the specific test. The test is conducted by using ring and walling effectual. Basic ring contains less sample of bitumen is suspended in the liquid like water pressure at a given pressure. The steel ball is placed upon the bitumen sample at the liquid medium heated at a rate of 5 Celsius per minute. Temperature is noted when a softening bitumen touches the metal plate which is a specified distance below. Generally, high softening point indicate lower temperature and the perfect hot climate. Sorry, sir. और ये नहीं लिए हैं लिए हैं कुछ नहीं किया है आवाज देखते हैं सीनियर का आवाज जोर से हम लोगों को सीनियर कहते थे कि यहाँ आवाज निकालो तो तीसरा मंजिल पर आवाज पहुंचना चाहिए है ना एक लड़का को भेज दो तो फट यहाँ से आवाज ना क्या बोला जब उसको सुनना अगर नहीं सुना तो फिर तुमको पूछना इस तरह से इतना आवाज तुम निकालो कि आवाज उड़ जाए सही समझा मतलब तक जाना चाहिए आवाज स्टेशन है बस सर कुछ वाटर टेस्टिंग it is well that the bitumen contain minimum water content to prevent foaming of the bitumen. It is heated over the boiling point of water. Water is bitumen determine the maximum known weight of specific is pure petroleum is free from water teaching and sliding. The weight of water. The weight of water concern and the collection of expression. Sorry. Allowable maximum water content should not be more than 0.2 by weight. Flashing point and fire point test. The higher temperature depend upon the grade of bitumen material leaving our volatile and their volatile catch fire which is very heavier and therefore it is essential to qualify the temperature for each bitumen grade. BIS defines the flash point as the temperature at which the vapor of bitumen momentarily catch fire from the flash under a specific test condition. The fire point is defined as the lowest temperature under the specific test condition which is bitumen material get ignited and burned. Thank you. हो गया चलो आ जाओ फर्स्ट स्लाइड डरिए मतलब प्रोसेस से डरिए फर्स्ट स्लाइड है यस सर अरे धीरे धीरे हुआ चिट्ठी थोड़ी है
पीछे किए सर इमल्सिफाइजिंग एजेंट वो होता है जैसे कोई दो लिक्विड को मिला के एक स्मूथ लिक्विड बनाया जाता है ताकि वो रोड बनाने में मतलब स्मूथ हो। सर मास्टिक एल्फाल्ट वो होता है जो सैंड और मिनरल को मिला के बनाता है, मिनरल फिलर्स वगैरह। ये नहीं पता सर। क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन का? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन कितना होता है ऑप्शन दे नहीं सर मैकेनिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं बताओ। बिटुमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? जो 5 सेकंड में बताया उसको टाइम मिलेगा। कितना परसेंट कार्बन होता है? 87%। ठीक है भाई नेक्स्ट लगा आंसर 1.0 आगे बढ़ो भाई स्लाइड आगे। ठीक है जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, चार और बिटुमेन में क्या डिफरेंस होता है? चार और मेजर डिफरेंस बिटवीन चार एंड बिटुमेन। एक लाइन में आंसर करता पोल तार से भी सर इसका मतलब होता या है या पोल तार उसका भी मतलब होता है जैसे कि हिंदी में उसको हम कतरा बोलते हैं, तो उससे भी हम जैसे मान लीजिए कि रोड सब बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। बिटुमेन भी क्या होता है कि पोल तार जो होता है वो लिक्विड में होता है और बिटुमेन जो होता है वो थोड़ा सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टिलेशन। थैंक यू। कोई भी बताओ इस टेस्ट से क्या निकालता है? सस्टेनिंग पॉइंट क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? और क्या फाइंड करते हैं? लोड इंटेंसिटी इम्पैक्ट टफनेस हार्डनेस तो किसी चलो आगे 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 बढ़ो। अच्छा फ्लैश एंड फायर मोड से क्या निकालते हैं? दोनों से टेंपरेचर की निकालते हैं, टेंपरेचर टेम्परेचर की निकालते हैं। चलो आगे कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट ग्रुप आइए। ग्रुप नंबर 14। अरे कुछ लोग चले गए इधर क्या? ग्रुप नंबर 9 कौन सा ग्रुप है तुम लोगों का? 10 ग्रुप 10। इसमें अटेंडेंस क्या नहीं बनाया तुम लोग? कहाँ बनाया अटेंडेंस? कहाँ अटेंडेंस बनाया तुम लोग? आवा तो पेमेंट सर बन गया। Good afternoon, everyone. Respected teacher and my dear friends, my name is Ritik Raj. Today, my team is going to represent topic stress and strain.
The topic includes contents such as introduction of stress and strain, types of stress and strain, deformation of body due to force, deformation body due to self-weight, principle of superposition. Now I will discussion on introduction to stress and strain. Stress, the force of resistance per unit area, sigma equal to Pya, where sigma equal to stress, P equal to external force or load, A equal to cross sectional area, strain, the ratio of change of dimension of the body to the original dimension. It is denoted by A. Second type of stress and strain. The stress may be normal stress or a shear stress. Normal stress is the stress which acts in a direction perpendicular to the area. The normal stress is further divided into tensile stress and compressive stress. Tensile stress and strain. Tensile stress applied to bar tends the bar to elongate, where P equal to applied normal load, A equal to cross sectional area of the body, I equal to original length of the body, dl equal to increase in length due to pull P acting on the body, sigma equal to stress include in the body, E equal to strain. Tensile stress equal to sigma equal to tensile load by normal load by cross sectional area, or sigma equal to Py. The ratio of increase in length to its original length known as compressive strain. Not P equal to R, where R is the resisting force which is generated at the axis of the object. It usually develops to resist the pull. And tensile strain is given by E equal to increase in length by original length equal to dl by L. The next topic delivered by Devdutt Kumar. Force per unit area or stress. इंटरनल फोर्स होगा कि एक्सटर्नल फोर्स होगा बताओगे तब ना स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ Sir, external force per area stress. एक्सटर्नल फोर्स पर एरिया External प्रेशर pressure. प्रेशर क्या होता है प्रेशर और स्पेस में डिफरेंस बता दीजिए फोर्स पर एरिया ही होता है प्रेशर में तो फोर्स पर एरिया यही होता है दोनों का सर मात्रक से हम हां यूनिट्स मैं आवाज आपको नहीं करिए नहीं आराम दोनों का सर यूनिट सेम ही होता है सर स्ट्रेस में ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता है साइज चेंज होता है हाँ सर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे सर दोनों साइड तो ग्रेविटी सर जब हम फोर्स लगाएंगे यस पहले स्ट्रेस डेवलप होगा या पहले स्ट्रेस डेवलप दोनों साथ साथ डेवलप ये फोर्स लगाएं सर स्ट्रेस होगा सर पहले Good afternoon, respected teachers and my dear friends. Well, sir. 19162. Now I will discuss on deformation of body due to the force. Deformation of a body due to a force acting on it is given by the formula delta L is equal to PL by AE, where delta L is change in length,
P is equal to load or force acting on the body, L is equal to length of the body, A is equal to area of the body, E is equal to modulus of elasticity. Now we can understand the deformation of body due to the force from the given figures. Here this is the original length of the body where tensile force acting on its axial end. The body gets deformed and it got elongated. And this is the when tensile force will act, and this is the length we will get after the tensile force when it acts on it. And this is the in case of compressive force. This was the original length of the body when compressive force acted on its axial end. Body get deformed from this length to this length. Now I will discuss about deformation of body due to the self weight. Actually, this is the length of the body, and here is the dark shaded region is the deformation where it takes place due to its self weight. And it is given by the formula delta L is equal to WL by 2E, 2AE. And here is the derivation of the formula from where we get the WL by 2AE. Derivation, sir, यहाँ पर actually this is the main formula I discussed in the previous slide. Here P is equal to the weight of the bar. यहाँ पे हम लोग P को weight of the bar लेंगे, जो कि mass into gravity होता है. Mass जो होता है density into volume होता है. यहाँ पे हम density into gravity को into कर दिया, इसको हम specific gravity बना, specific weight बना दिया ओमेगा. और इसको जब फिर हम लोग यहाँ पर जब पुट करते हैं P के जगह पे और L को यहाँ पर dx मानते हैं क्योंकि ये change in length है, तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास डेल्टा L इक्वल टू ओमेगा into x into dx by e आता है. जब हम इसको जो है मतलब कि इंटीग्रेशन करते हैं बिटवीन 0 to L तो हमें ये इक्वेशन फॉर्मूला आके आता है 0 से L के बीच में ओमेगा x by 2e. और जब हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू होता है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम. Here volume is area into length and the omega is specific weight. When we put the value of omega here and we will get the value delta is equal to delta L is equal to WL by 2A. And next slide will be discussed by Jackant. Good afternoon, all respected teacher and my dear friend. My name is Jackant Kumar and my roll number 19161 and my topic principle of superposition. When a number of loads are acting on a body, the resulting strength will be the algebraic sum of strength caused by individual load. जैसा कि हम एग्जांपल से समझते हैं. इसमें जैसे कि अलग-अलग न्यूट्रल न्यूट्रल कनेक्ट है, इधर लोड लगा है. ये और पीछे क्वेश्चन में अच्छा है. यस सर. क्वेश्चन को समझाओ. क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं? क्यों? Yes sir. 50 sir. 50 sir. 50 sir. यहाँ पर सर 20 आएगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर 80 लगा है ना सर. इसको हम 50 टेंसाइल यहाँ पर टेंसाइल लगा दिया 30 बचेगा ना सर. कैसे? यहाँ सर 20 है फिर ये 10 बचा हुआ है ना सर. उसमें 30 हुआ है नहीं होगा. हाँ सर उसमें सर 30 हमारे पास कंप्रेसिव बचना है ना सर. तो इसको हम यहाँ पर बी और सी पे लगा के इसको इक्वल कर दे दोनों साइड सर. और फिर 10 जो बचता है उसको बी और डी पे लगा दिए. ठीक है. जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो. जैसे मैंने बताया ठीक है बताओ. बताओ क्वेश्चन कैसे. फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट 50 किलोमीटर से इधर फोर्स लगा है, इधर 80 किलोमीटर लगा है. इधर से इसको न्यूट्रल करने के लिए स्पेशल 50 किलोमीटर इधर फोर्स से बैलेंस करने के लिए लगाया है. कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? अच्छा कौन सा टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स. सॉरी सर टेंसाइल इसके बाद इधर ठीक है. आगे जी
इसको सर बैलेंस करना, इसके बाद इसको सर इधर से सर कंप्रेसिव फोर्स 40 किलोमीटर लग रहा है। इसके बाद इसको सर बैलेंस करेंगे लेफ्ट साइड से 30 किलोमीटर कंप्रेसिव फोर्स लगा के, इसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद सर इसमें जैसा कि सर इसमें सर 10 किलोमीटर राइट साइड से फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव, और इसके बाद इधर इसको बैलेंस करने के लिए इधर लेफ्ट साइड से कंप्रेसिव फोर्स ये कहां से है लेफ्ट वाला यहां से कहां से आया कैसे आया पीछे वाले ये समझा तो सी से डी सर। हां कैसे क्या वो क्वेश्चन बताओ इसको सर सी पे तो आपको पॉइंट दिख रहा है ना फिगर अभी लास्ट फिगर पेपर 15 हां सर ये सर वही सी कौन समझा सकता है सर? ये सर कंप्रेसिव नेचर में है ना सर, ये तो 20 यहाँ पर लग रहा है सर, यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ सर 20 हमारे पास है कंप्रेसिव, ये भी कंप्रेसिव है सर। तो यहाँ पे इसको हम इक्वल कर दिए और बचता हमारे पास 10 सर, 10 को हम यहाँ पर जो है रिजॉल्व कर दिए, ये भी कंप्रेसिव का नेचर है सर। इसको अगर डालते हैं तो कंप्रेसिव है ना सर दोनों। सर इसको ऐसे लगाइए, यहाँ पर इसको लगा के एरो डालते हैं कंप्रेसिव। मुझसे भी नहीं होना ये सर मैं नहीं आगे बढ़ रहा है एक मिनट के डायग्राम वाला देखो क्या देखते हैं हम लोग बैलेंस किया अच्छा सर यस सर यस सर 50 20 70 ठीक है डायरेक्शन देखिए। इसके बाद सर यहाँ से इंक्रीजिंग इक्वल है रेडियल सरफेस निकालेंगे फॉर्मूला इसमें सर P1/A into L1 इसमें सर P1 सर सेक्शन 1 का लॉग हुआ ठीक है चलो आगे बढ़ो। इसके बाद यहाँ से सर कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू सर 0.2857 इसके बाद सर डिक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ BD। देखो इंक्रीज और डिक्रीज को पहले कैसे लिख देते हो, चेंज इन लेंथ लिखो। सर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो डिक्रीज ही होगा ना, इंक्रीज तो नहीं हो सकता। चेंज इन लेंथ लिखाता है याद रखो। हाँ सर चेंज इन लेंथ अब वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा नेचर हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। बराबर फोर्स लगता है इन लोग कंप्रेसिव को जो है ना डिक्रीज ये लोडिंग का काम हो गया तो डिफॉर्मेशन खबर नहीं तुम लोग तो इसमें एकदम सही है। हम मान लीजिए ये बात लेकिन इन फ्यूचर बता रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो उसके बाद चेंज इन लेंथ लिखा ये तुम्हारा इस पीपीटी के लिए कभी नहीं रहते हैं इन फ्यूचर। ये तो ठीक है यहाँ नेचर समझ में आ रहा है सारे डायग्राम का, उसमें दिक्कत नहीं है, बढ़िया की पूरी पूरा सही है। जनरली कभी इन जनरल हो सकता है यहाँ तो आपको डायरेक्ट है कंप्रेसिव फोर्स है इसलिए डिक्रीज करती है ऐसा फोर्स है यहाँ बिल्कुल सही हुआ सर। जनरल तो मैं बता रहा हूँ इन जनरल हम लोग कह रहे हैं आगे के लिए। इसके बाद सर यहाँ से देखिए इधर में बीडी में सर कंप्रेसिव फोर्स का राशन इसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करके इसके बाद टोटल एलिमिनेशन ऑफ द फोर्स 0.1 मिलता है जिससे नेगेटिव इंडेक्स से कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा। ठीक है चलो आगे वेरी गुड थैंक यू सर। ये ओवरऑल है यस सर ओवरऑल कंप्रेसिव यस सर अब इंडिविजुअल यस सर ग्रुप नंबर 11 अच्छा ठीक है ग्रुप नंबर 11 बाद में कर लेंगे। आ गया क्या नहीं आया नहीं नमाज पढ़ेंगे बोल के ग्रुप नंबर 12 Good morning to all of you.
My name is Sanjay Kumar. We have participated Sanjay Kumar, Suraj Kisco, MTE ISM, Preeti Bhatia. My top content by my topic Introduction to Elastic Constant, Young's Modulus, Hooke's Law, Elastic Deformation, Rigid Material, Modulus of Rigidity, Bulk's Modulus, Poisson Ratio. Elastic Constant. Elastic constant. Elastic constant are the parameter expressing the relation between the stress and strain on the material within the straight range that the material exhibit elastic behavior. मॉडुलर इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रेन और स्ट्रेट के बीच जो रिलेशन बताता है उसी को इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी high in covalent compound such as diamond, यानी इसका कोवलेंट कंपाउंड हाई होता है. लोअर इन मेटालिक्स एंड आयोनिक क्रिस्टल, इसका मेटालिक्स लोअर होता है, आयोनिक क्रिस्टल. लोएस्ट इन द मोलिकुलर morphous solid such as plastic and rubber. Molecular morphous इसका लोअर होता है, जैसे प्लास्टिक एंड रबर के तरह, उसका आकार जैसे भी हो सकता है. Young's modulus, the Young's modulus or the modulus of elasticity in the tension or compression in a mechanical property that measure that tensile or compressive stiffness of a solid material when the force is applied lengthwise. It quantifies the relationship between tensile compressive strain rho and axial strain sigma. Sorry. In the linear elastic region of the material and the deformation using the formula. यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला स्ट्रेट बाय स्ट्रेन होता है. यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट पास्कल होता है. इसको डायमेंशन फॉर्म में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं. जैसे सर और इसको सिग्मा से डिवाइड करते हैं, इसे एप्सिलॉन से डिवाइड करते हैं और कोई एक ग्राफ देंगे जो कि ग्राफ का नाम पिक्चर होगा. और थैंक यू सर. नेक्स्ट बाय कौन सा पॉइंट को क्या बोलेंगे? यस सर. इसको स्ट्रेट बोलेंगे, इसको स्ट्रेट बोलेंगे. और स्ट्रेट बोलेंगे, इसको स्ट्रेट बोलेंगे. उसके बाद पॉइंट सब है उसमें इलेक्ट्रॉन डायगोनल यंग्स मॉडुलस जो होता है ना सर, उसमें सर यंग्स मॉडुलस के बारे में नहीं बोल रहा है. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और किसका है? जब डार्क मटेरियल है, मीडियम मटेरियल है, कौन मटेरियल का है वो? किस मटेरियल का है वो? यंग्स मॉडुलस का. यंग्स मॉडुलस मटेरियल है. ये कर्व जो है रेजिस्टेंस का बनाया ना, कौन से मटेरियल? किसी चीज का होगा ना, कोई मटेरियल का होगा ना, या कोई स्टील का होगा या कंक्रीट का होगा. किसका? जहाँ से कॉपी मतलब यूज वहाँ पे लिखा होगा ना.
ग्राफ लेते हो उसके बारे में स्टडी कर लो, समझा? ग्राफ का हेडिंग लेके नीचे में तो समझ में आएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या? यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है सर जैसे कि चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसे यंग्स मॉडुलस कहते हैं। यस सर। अच्छा सर क्या कंप्लीट कर लेंगे? चलो आगे नेक्स्ट कौन है? एक्सप्लेन क्या होगा? यंग्स मॉडुलस को होगा तो चेंज Good afternoon to all of you, my respected teachers and my dear friends. Myself Suraj Kisku from Civil Department. My roll number is 191135. My topic is Hooke's law. Hooke's law are proposed by great scientist Robert Hooke. It states that Hooke's law is law of physics that states the force needed to extend or compress a spring by some distance x scales linearly with respect to that distance, that is Fx equal to Ks, where K is the constant factor characteristic of the spring and x is a small compares to the total possible deformation of the spring. The rate of the spring constant K relates the force of extension is Hooke's law is force is directly proportional to x. X distance है. Distance है. Hooke's law states that force is directly proportional to x and also stress. मतलब सर एक स्लाइड से छूट गया है तो इसके बाद वो वाला एक्स डिस्टेंस होगा और इट ऑल्सो स्ट्रेंथ विद इन इलास्टिक। इसके सर गलती हो गया मतलब इसके बाद एक स्लाइड था तो मतलब ये 12 बनाया था उसके बाद बोलते तो मतलब स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो सर गलती हो गई एक स्लाइड छूट गया, स्लाइड छूट गया इसके बाद बोला तो सोचा इसके बाद बोल दो। नेक्स्ट टॉपिक इज elastic deformation. Deformation, what is deformation? The process of change effect of shape, size and volume etc. There are two types of deformation: elastic deformation and plastic deformation. Elastic deformation is the change of the shape of the body as a reaction to apply stress. The deformation is only temporary and once the stress is relieved, the undeformed shape of the body is restored. Elastic deformation alters the shape of the material upon the application of force within its elastic limit. मतलब यही कि यदि कोई मटेरियल पे इलास्टिक उसको कहते हैं से कोई मटेरियल पर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर देता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और प्लास्टिक होता है जो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में मतलब रिटर्न नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक का स्प्रिंग और रबर, और प्लास्टिक का हो जाएगा सॉलिड या स्विगम, वेट स्विगम। नेक्स्ट टॉपिक सर एक सर बाहर गया हुआ है मतलब नमाज पर, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस माय ग्रुप मेंबर प्रीति। एमडी असरफ, सूरज एमडी असरफ। जीरो 51 रजिस्ट्रेशन। Good afternoon, everyone. Respected teacher and my dear classmates. Myself Preeti Bharti and my roll number is 19104. Now I will continue this topic, bulk modulus. When a
when a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity. The ratio of direct stress to the corresponding volumetric strength is known as bulk modulus. Bulk modulus is denoted by K. K is equal to direct by volumetric strength. हम बना डायरेक्ट क्या? अरे उसमें से देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। एंड दिस फिगर, इसमें कोरेसिव फोर्स लग रहा है जिससे कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, Poisson ratio. Poisson ratio is a measure of the Poisson effect, the deformation of a material in direction perpendicular to the specific direction of loading. The value of Poisson's ratio is the negative of the ratio of transverse strength to axial strength. Most material have Poisson ratio value ranging between 0.0 and 0.5, और इसमें परपेंडिकुलर कोरेसिव फोर्स लगने से लगता है, जिससे कि इसमें परपेंडिकुलर कोरेसिव फोर्स लगता है और वर्टिकल में डिफॉर्मेशन होता है। थैंक यू सर। नहीं, गूगल से और बुक से लिए थे। यस सर, बुक्स चलो आगे करो। क्या, कौन सा? फॉर्मूला सही है, देखो तो फॉर्मूला सही है। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किए सर। क्या लिखा हुआ है? V is equal to D F naught trans by D F naught axial. ट्रांस मतलब पेन देते बता देंगे इससे बनेगा ट्रांसवर्स। अच्छा, वहां पे मतलब इन जनरल बताओ ट्रांसवर्स मतलब क्या हुआ, किस डायरेक्शन को ट्रांसवर्स बोलते हैं? एक्स वाई जेड इसको बोलते हैं। वही को डायरेक्शंस नहीं हो सकते, वुड के डायरेक्शन से कंपेयर होता है हमेशा। हेलो, कौन सा डायग्राम ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू होता है कि नहीं पोजीशन रेशियो का? नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं? -1 पॉसिबल है कि नहीं? पोजीशन रेशियो वैल्यू -1 पॉसिबल है कि नहीं? या -0 है? नहीं है पॉसिबल। नेगेटिव वैल्यू पोजीशन रेशियो नहीं है पॉसिबल। -1 नहीं, नेगेटिव वैल्यू, चलो कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा, ये सुनो अब लोग, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो पॉसिबल है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो यस, कोई नहीं। एग्जांपल तो किसका पॉसिबल है? किसका? ह्यूमन सेल का। मतलब क्या हुआ नेगेटिव? मतलब
मतलब रेशियो है ना, दो चीज का रेशियो है ना, इसका मतलब क्या होगा? सही जा रहा है, सही से हाँ निगेटिव का होगा। हाँ मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव फॉर्मूला तो माइनस का है, माइनस वाला से प्लस में आएगा। मैंने ये बताया नेगेटिव सही है। ये तुम फॉर्मूला गलत लिख दो। नहीं सर, फॉर्मूला सही है क्योंकि इन लोगों को वर्ड मिलती है बेस नहीं सर, कॉपी पेस्ट नहीं है। सही है लेकिन उनको ठीक है पीछे पीछे ठीक है जाओ। कौन सा ग्रुप है आपका? A very good afternoon to one and all, respected sirs and my dear friends. My name is Sachin Kumar, roll number 19140. Today the topic of my presentation is all about principal stress and compound stress. So first of all we will see contents about this topic. So, first content is content is axial loading and its types, and second is stress tensor, and third is principal plane and its types, and fourth one is sign convention for analytical method. So, first one we will see axial loading. First we will see what is axial loading. So, when we apply load above axis, then it is called axial loading. जब हम लोग कोई भी लोड लगाएंगे एक्सिस पे उसे कहते हैं एक्सियल लोडिंग। एंड वी विल सी टाइप्स ऑफ एक्सियल लोडिंग। फर्स्ट वन इज यूनि एक्सियल लोडिंग, सेकंड इज बाई एक्सियल लोडिंग एंड थर्ड इज ट्राई एक्सियल लोडिंग। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज यूनि एक्सियल लोडिंग। सो यूनि एक्सियल लोडिंग इज मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेस, मींस दिस इज ए सॉलिड। इस सॉलिड में एक ही प्लेन पे लगे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे है, दैट इज सिग्मा एक्स। And second we will see biaxial loading. In biaxial loading, members subjected to direct stress into mutually perpendicular plane. In this figure we will see that this is a solid and first one is the load is given in x-axis and second is y-axis. Third one is triaxial loading. In triaxial loading, members subjected to direct stress in three axis plane. In this we will see दिस इज ए सॉलिड एंड हियर यहाँ पे हो रहा है कि पहला जो है एक्स एक्सिस पे लग रहा है, सेकंड वाई एक्सिस एंड थर्ड इज जेड एक्सिस, एंड दिस इज ट्राइएक्सियल लोडिंग। आफ्टर दैट स्ट्रेस टेंसर will be described by my next members Uttam Kumar. Thank you. Good afternoon, dear sir and my classmates. Myself Uttam Kumar, roll number 19,112. I will continue shear tension. Shear tension is three types. पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी is physical quantity which have magnitude of scalar quantity is only for magnitude के लिए होता है। Example mass, distance, speed, temperature and current. Note current are scalar quantity but not vectors। एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है। सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
and force and acceleration. Third is tensor quantity. Those physical quantities having different magnitude and different direction. टेंसर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जो सर एक समय पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते होते हैं. जैसे एग्जांपल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे सर हम सेंटर पे लगा रहे हैं तो ये 360 मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. This ml moment of inertia equal to ml square by 12. बोलो ना तुम बोलो ना सर. जैसे यहाँ देख सकते हैं बीम और कैंटिलीवर और कैंटिलीवर बीम. सर यहाँ से पिलर सर यहाँ दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन हो रहा है. पिलर बना है सर और कैंटिलीवर बीम नीचे की ओर बना है. ml इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ml स्क्वायर बाय 3 होगा. और टेंसर क्वांटिटी का सर सेकेंड एग्जांपल स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल फोर्स बाय एरिया. सर यहाँ जैसे कि सर इंटरनल टेंसियल फोर्स बाय एरिया, जैसे कोई टेबल है उसके ऊपर से अगर स्लाइड करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स वाला एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन. स्ट्रेस सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी. अरे पीपीटी कम से कम रीडिंग तो डालो जो है. स्ट्रेस इज सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी. स्केलर इज zero order tensor quantity because its magnitude only. Vector are first order tensor quantity because it is magnitude as well as direction. Strain is second order tensor quantity because it has magnitude, direction, plane of application. What do you mean by tensor quantity? पढ़े ना अभी टीचर पढ़े ना क्या है टेंसर क्वांटिटी बताइए. टेंसर क्वांटिटी सर वो ज्यादातर एक समय पे अलग डायरेक्शन और अलग मतलब डिफरेंट मतलब एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको बताओ तो क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय टेंसर क्वांटिटी? जिसे आप पढ़ते हैं ना वेक्टर स्केल उसका क्वांटिटी आपकी टेंसर क्वांटिटी क्या चीज है वहां लिखा हुआ है आप देख कर क्या. अरे डरो नहीं हम लिखा हुआ है डायरेक्शन. डरो नहीं, वेजिटेरियन है खाएंगे नहीं. बताओ क्या लिखा हुआ है. सॉरी सर पूछिए पहले. मेरे पूछिए सचिन कौन है आगे है और यस ठीक है. थैंक यू सर. नेक्स्ट मुरारी. मेरा सर मुरारी निकल. Good afternoon, sir. All my dear friends, good afternoon. डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दो. पढ़ो ना, रीडिंग तो करो कम से कम. My topic is principal plane. A principal plane which carry on a normal stress and no shear stress in called is a principal plane. Principal plane might be the vector, horizontal or inclined. Measure principal stress. The maximum value of the normal stress acting on the principal plane is called as measure principal stress. Minor principal stress. The maximum value of stress acting on a principal plane is called minor stress.
Thank you, sir. Yes, sir. First of all, good afternoon, dear sir and my respected sir and my dear friends. My name is Amarjit Kumar. I am from civil branch, first semester. I am presenting in Singh convention of analytic method. All the tensile stress and strain are taken as positive. All the compressive stress and strain are taken as negative. Singh convention. थीटा माइनस इट इज पॉजिटिव यदि थीटा का मान पॉजिटिव लेते हैं तो इफ मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन एंड इट इज नेगेटिव इफ measured anti-clock from a vertical plane. Sigma x, it is positive if it tensile in nature and it is negative if it is a compressive in nature. Sigma x, it is positive if it is tensile in nature and it is negative if it is a compressive in nature. The shear stress which tends and rotate the elements in the clockwise direction vertical face x dash x axis is taken as positive. The shear stress which tends to rotate the elements anti-clockwise direction horizontal face or x y dash y axis taken as negative. Thank you. Analytical method measure. कोई एलिमेंट्स यदि मतलब किसी एलिमेंट्स पर या स्ट्रेस या स्ट्रेन फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है जो उसी को निकालने के लिए टेंशन फोर्स और यदि उस पर मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो मतलब कंप्रेसिव हो जाएगा यदि उस पर मतलब विपरीत फोर्स लगाए तो वो इंक्रीज हो जाएगा सॉरी हाँ State of stress सुने हैं state of stress फाइंड करो state of stress के अंदर में क्या क्या चीज फाइंड करें बढ़िया होगा आपको वास्तविक क्या आप बता सकते हो क्या क्या चीज फाइंड करते हैं एनालिटिकल मेथड से जब दो मेथड होता एक एनालिटिकल मेथड होता है दूसरा कौन सा मेथड होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करने का कोई बता सकते हो कौन को समझे यस एनालिटिकल मेथड दूसरा ग्राफिकल मेथड इसको मूव करके मोड़ तो क्या निकालते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओके ना ठीक है अरे थोड़ा तैयारी करके आओ यार तुम एकदम तैयारी कोई होमवर्क नहीं करके आया मतलब इनफैक्ट दो ग्रुप में बटा है सब शायद मटेरियल्स का और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मटेरियल्स वाला तो उसका तो और बेहुदा सब मतलब इतना इजी टॉपिक मिला फिर भी नहीं करके आया है सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला तो और सब ऐसे ही है कोई होमवर्क करके नहीं आया है कुछ तो थोड़ा मेहनत कर लोगे ना थोड़ा सा ही मेहनत मुझे बताओ तो आपका नाम अमरजीत कुमार थोड़ा मेहनत करके आओ देखो अब एक और बचा हुआ है ना एक और अमरजीत डिजास्टर या स्ट्रक्चर 19132 मुरारी कुमार सर उस दिन मेहनत करके मतलब डिजास्टर में कहीं से एकदम छाप दिए 50-60 स्लाइड ठीक है आप नेक्स्ट ग्रुप आइए ग्रुप नंबर 14 सर तुम 30 है 40 आइए 40 14 आ जाओ रजनीश राज अमित कुमार गोपेश किशोर
कहाँ है? 14. Good afternoon, everyone. My name is Rajnish Raj. Today, the topic of my team presentation is all about beam. My team members are Amit Kumar and Kopesh Kishore. In this presentation, we will discuss about types of beam, types of determinate and indeterminate beam, types of load, and the last one, types of supports. First of all, what is beam? Beam is a horizontal structural member used to carry vertical load, shear load, and sometimes horizontal load. It is the major component of building structure. It mainly used in construction of bridges, trusses, and other structures which carry vertical load. In other words, any structure member which cross section is much smaller compared to its length and undergoes lateral load known as beam. Here the types of beams are continuous beam, simply supported beam, fixed beam, overhanging beam, and the last is cantilever beam. Continuous beam. Continuous beams are those that have more than two supports used on it. One end of it is supported by hinge support and the other one is roller support. One or more support are used between these beams. It is used in long concrete bridge where length of bridge is too large. And the second is simply supported beams. Simply supported beams are those that have supports at both ends of the beam. One end of the beam is supported by hinge support and the other one by roller support. This support allows to horizontal movement of beam. Its beam type undergoes both shear stress and bending moment. And the third is fixed beam. A fixed beam is one that is fixed on both ends of the beam with support. This type of beam does not allow for bending, movement production and will not have any vertical movement or rotation. Fixed beam are most frequently used in trusses and similar structures. Overhanging beam. An overhanging beam is one that is supported at two different areas, typically at one end and in the middle of the beam, but does not have a support at the other end of the beam, leaving it hanging. This type of beam extends beyond the walls or columns and the overhanging section of the beam is unsupported. An overhanging beam is a combination of a simply supported beam and a cantilever beam. Here the example of and the last one is cantilever beam. A cantilever beam is one that is free hanging at one end of the beam and fixed at other. This type of beam is capable of carrying loads with both bending moment and shear stress and is typically used when building bridges, truss or similar structure. The end. Now I'd like to call Amit Kumar to continue the presentation. Good afternoon, everyone. My name is Amit Kumar, and my topic is determinate and indeterminate beam. Determinate beam. If the structure can be analyzed by use of the equation of equilibrium is known as strictly determinate structure. The equation of equilibrium, sum of the horizontal force is 0, sum of the vertical force is 0, and sum of the moment about any point is 0. And indeterminate beam. The structure which cannot be analyzed by using the equation of equilibrium is known as statically indeterminate structure. Types of determinate beam: simply support beam, cantilever beam, single and double overhanging beam, and 3 hinged arches. And types of indeterminate types of indeterminate beams: fixed beam, continuous beam, fixed arches, and 2 hinged arches.
next Hooke episode. Good afternoon to all of you. I am going to tell about the types of load and types of support. Types of सर हिंदी में बोल सकते हैं? ये सर टाइप्स ये क्या बता टाइप्स ऑफ लोड में से पहला कंसंट्रेटेड लोड है इस मतलब इसको पॉइंट लोड भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है कि जो भी लोड एक्ट होता है एक पॉइंट पे होता है इस कारण से इसको पॉइंट लोड बोलते हैं लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लेंथ प्रैक्टिकली अगर देखें तो पॉइंट लोड में थोड़ा सा लेंथ आता है लेकिन वो बहुत कम होता है इस कारण से इसको पॉइंट लोड बोलते हैं सर आगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है सर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है सर एक लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है इस कारण से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो तरह का होता है सर एक यूडीएल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस लोड बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहता है सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट लेंथ कांस्टेंट रहता है और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का मैग्नीट्यूड वेरी करता है लेंथ में लेकिन कांस्टेंट रेट से वेरी करता है आगे सर टाइप्स ऑफ सपोर्ट पहला है रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट में सर किसी एक एक्सिस में मूवमेंट अलाउ रहता है सर और इसमें और मोमेंट जो रहता है वो भी अलाउ रहता है सर और पिन सपोर्ट में सर मोमेंट अलाउ रहता है सर और जो एक्सिस है सर उसमें मोमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और तीसरा है फिक्स्ड सपोर्ट इसमें सर इसमें मोमेंट और दोनों एक्सिस जो है सर उसमें जो मोशन जो है सर वो रिस्ट्रिक्ट किया रहता है सर और चौथा है सिंपली सपोर्ट सर सिंपल सपोर्ट सर the simply support the simple support is used when where the structure member has to rest on the external structure this type of support are not used widely in daily life it is similar to the roller support आगे सर उसका एग्जांपल है सर थैंक यू सर yes. Yes, sir. What is the example of roller support? Practical example of roller support. Trolley bag, sir. Yes, sir. अच्छा, trolley is there. Roller support. Roller support. Yes. Example of wind support. Beam support का sir. Gate yes sir gate sir fixed support pillar सब sir yes sir yes sir दो सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सर और मोस्ट पीक्स में सर तीन सर एक्स वाई और थीटा
रोलर में सर सिर्फ एक आएगा सर, कोई एक डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन। रेफरेंस क्या है सर? हम कहते हैं कि फिक्स्ड बीम ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस है कुछ तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए? हाँ? पहले है रेफरेंस दिखाओ। रेफरेंस कहाँ है लिखो? कहाँ है रेफरेंस? मतलब ये जो तुम फोटो है कहाँ से निकाल के लाया है? डेटा लिखे हो? कहाँ से लिखे? कहाँ से लिखे हो? किसी बुक से लिखे हो? बुक से गूगल से लिखे। बताओगे ना, हम कहने गलत है तुम प्रूफ करोगे ना, सर गलत नहीं है, यहाँ से निकाल के लाए हैं, उसी को रेफरेंसेस कहते हैं। ओके सर, ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। ग्रुप नंबर 15 ग्रुप 15 ग्रुप 15 है। यस, आते हैं। अकेले हैं? अकेले हो? एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तबीयत खराब हो गया। आया था सर, उसको लेके गए निकल गया भाई। दो मिनट के अंदर खत्म करो। 2 मिनट से ज्यादा मत बोलना। कितना स्लाइड है? बहुत ज्यादा। हाँ, जो भी कंसेप्ट मेरा बताएं ज्यादा नहीं। सर उसका हेल्थ इशू है सर, वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। Good afternoon to everyone. My name is Sumit Aditya. I am presenting my topic shear force and bending moment. Content: introduction of the shear force diagram and bending moment diagram, फिर sagging and hogging moment, फिर sign convention for drawing SFD and BMD, example solution of SMD and BMD for cantilever with concentric load, example solution of SFD and BMD for simply supported, example solution of SFD and BMD for fixed support. SFD and BMD. The shear force diagram SFD and bending moment diagram BMD of the beam shows the variation of the shear force and the bending moment along the length of the beam. These diagrams are extremely useful while designing the beams for various application. Yes, sir? The shear force, which is defined as the algebraic sum of all vertical forces either to left or the right hand side of the section. A bending moment M, which is the defined as the algebraic sum of the moment of all vertical forces either to the left or the right. फॉन्ट सर स्क्रीनशॉट लेके डाला है, नहीं तो सर खोज के डाले हैं सर, ऐसा थोड़ी ना। यस सर, था सर पर नहीं हो पा रहा था उससे। नहीं सर, टाइम भी था लेकिन हो नहीं पा रहा था सर, वो प्रैक्टिस नहीं है ना। यस सर। कैसे बनाया जाएगा? नहीं सर। दूसरी बात है कि जब हम कहे थे कि ये जो बनाया हुआ है भेज दिए थे सर, उसके पास भेजे थे। मेरे पास भेजा था। नहीं सर, आपके पास नहीं भेजे थे। हम तो बोला था कि मेरे पास भेजना है। अरे तुम यहाँ बैठे किसी फैकल्टी से पूछ लोगे कि सर 10 मिनट का समय दे दीजिए, 10 मिनट ज्यादा है। और मैं भेजा था उसको रिटर्न किए, जो गलत था वो प्रश्न करने के लिए हुए थे, भेजने नहीं किया था। जो मेहनत करके आए हैं चलो आप कैसे शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यस सर। एसएफडी बीएमडी, ये चारों कॉन्सेप्ट को बता दो। ये बताओ, बाकी अब बताओ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अपना लैंग्वेज में इसमें देखना नहीं है। क्या बताया एसएफडी या बीएमडी बता दो। पीपीटी तो देख लीजिए। अब शियर फोर्स होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ऐसे शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, यही चारों नहीं पता है सर।
नहीं पता, सॉरी सर, नहीं पता। मुझे लग रहा है सर, चलो नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ। कौन है? ग्रुप में क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? सर ये व्हाट्सएप पे भेजा है। सर 2 मिनट, ये बहुत ही लेट से भेजा था सर। कौन सा ग्रुप नंबर है? अभी ग्रुप नंबर 16 किसका है? ग्रुप नंबर 16 नहीं है, 17 17 आइए, 17 आइए, उसके बाद आप ठीक है। आप तो पहले हैं विलासा। आपका रोल नंबर नंबर की बात है। और सर आ गया उसका। इसको देना अभिलाषा आप कीजिए, उसके बाद लास्ट ग्रुप बचेगा। Good afternoon, dear respected teachers and my dear friends. My topic is shear stress. Shear stress is the stress act parallel or tangential to the surface. It is denoted by tau. As we know, stress in the load applied per unit area. In the same way, shear stress is the tangential load applied per unit area. Next, so let us show in image. टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस होता है। थैंक यू सर, हम अकेले ही थे। शियर स्ट्रेस सीएल स्ट्रेस क्या होता है बताइए। आप किसी पर भी एक चीज लिख दीजिए और उसको बताइए मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल किसको बताइए कि कैसे हम लोड लगाएंगे तो सीएल स्ट्रेस डेवलप होगा। सर ये बताइए, सबको बताइए। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से अप्लाइड होते हैं। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से अप्लाइड होते हैं और नॉर्मल उधर से आते हैं और कंप्रेसिव ऐसे लगते हैं। सर अप्लाइड अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियल फोर्स शियर स्ट्रेस। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
Pascal. Tension. 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 सर टेंशन क्वांटिटी टेंशन क्या सर तो एक दो से ज़्यादा से चलिए ग्रुप नंबर 11 अच्छा चार का क्या हो गया क्या हो गया ग्रुप नंबर 17 का हो गया अखिली कंसारी अखिली कंसारी आप हो गया वो दूसरे ग्रुप में है नहीं चार लड़का में आपको तो क्या धन्यवाद करना है अखिली कंसारी चौथा शहंशाह तीसरा था अशरफ और चौथा था हलाल ये सर जी लेवल है जी लेवल Good afternoon, my respected teachers and my friends. I am presenting my PPT, Thermal Stress. Introduction to Thermal Stress, Cause of Thermal Stress, Formula of Thermal Stress. Thermal stress is base of varying section. Linear expansion, linear thermal expansion, application mostly to sites. Now the initial length and not m of given slide. Materials are the temperature difference delta T and the coefficient of linear expansion of the solid A 1 by degree Celsius. The change in length delta T m of the solid can be calculated by L बराबर L naught 1 plus alpha delta T. The the stress caused by initial force credit of register thermal deformation if temperature deformation is permitted to across freely no load of stress will be included in the stress in the same cause where temperature deformation is not permitted an initial stress is created. The initial stress created is termed as thermal stress. This stress is calculated by multiplying the change in temperature, multiplying thermal expansion coefficient and materials. Young's modulus, E is Young's modulus, alpha is thermal expansion coefficient, Ti is initial temperature and Tf is the final temperature. Helal. MD Helal. Yes. Good afternoon, respected sir and dear friends. I am MD Helal. My topic is deformation due to temperature change in bird. Here are the increase in length. Delta T equal alpha L delta T. Alpha L delta T equal alpha L by E. Sigma equal E alpha delta T. Thermal stress in bar of varying section. A temperature increase bar ABC will expand, but since it is fixed at it, A and C compressive stress will produce sigma A sigma 1 A1 equal sigma 2 A2 total deformation, then cos B equal D1 plus D2 equal sigma 1 L1 by E1 plus sigma 2 L2 by E2. Thank you. आप क्या निकाले
अभी आप क्या निकाले हैं, क्या चीज बता रहे हैं? Normal stress in bearing section. Yes. Alpha increase length. जी सर. सिग्मा 12 E A E alpha delta T. अल्फा को क्या बोलेंगे? हाँ, कैपिटल ई को क्या बोलेंगे? हाँ, अल्फा को क्या बोलेंगे? सिग्मा को क्या बोलेंगे? घबराओ नहीं, आराम से. ई जो है ना सर, ई यंग मॉड्यूलस है और अल्फा अल्फा थर्मल एक्सपेंशन है. सुनील आदित्य Good afternoon to everyone. I'm sorry, sir. My name is Sumit Adit. I'm presenting my topic shear force and bending moment. My content is introduction of shear force diagram and bending moment diagram. Second one is sagging and hogging moment. Third is sign convention for drawing SFD and PFD. Four is the example solution of SFD and PFD for cantilever beam with the concentric load. Fifth is the example solution of SFD and PFD for simply supported beam with concentric load. Third is the example solution of SFD and PFD for fixed beam with concentric load. SFD, the shear force diagram and the bending moment diagram of the beam shows the variation of the shear force and bending moment along the length of the beam. These diagrams are extremely useful while designing the beams for the various application. A shear force it is defined as the algebraic sum of all the vertical forces either to left or to the right hand side of a section. Bending moment is defined as the algebraic sum of all the vertical forces either to the left or the right of the section. Shear force diagram. A shear force diagram is the graphical representation of the variation of the shear force along the length of the beam and is abbreviated as SFD. A bending moment diagram is the graphical representation of the variation of the bending moment along the length of the beam and is abbreviated as BMD. The sagging and hogging. The positive moment which called sagging developed at the mid of the span. सैगिंग में होता है नीचे जो होता है टेंशन होता है और ऊपर में कंप्रेशन होता है तो उसे सैगिंग कहते हैं और हॉगिंग में ये जो है ये नीचे में कंप्रेशन है ऊपर में टेंशन है इसको हॉगिंग कहेंगे. सैगिंग ये साइन कन्वेंशन. बेंडिंग मोमेंट सैगिंग अगर होगा तो बेंडिंग मोमेंट विल बी पॉजिटिव होगा और अगर हॉगिंग हुआ तो बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होगा. शियर फोर्स एक राइट साइड में डाउनवर्ड अपर अपवर्ड फोर्स लगेगा और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो शियर फोर्स विल बी पॉजिटिव होगा और अगर राइट साइड में अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगा तो शियर फोर्स विल बी निगेटिव होगा.
Sign convention, a force that tends to the shear, the left portion of the beam upward with respect to the right portion is said to produce a positive shearing force. Second, the force that tends to the shear, the left portion of the beam downwards with respect to the right portion is said to produce a negative shearing force. For bending moment, a force that tends to bend the beam downward is said to produce a positive bending moment. डाउनवर्ड रहेगा तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसमें नीचे में टेंशन रहेगा, ऊपर में कॉम्प्रेशन रहेगा। और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट में ये जो नीचे रहेगा बीम में जो अगर उसमें नीचे कॉम्प्रेशन आएगा, ऊपर टेंशन रहेगा, तो वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देगा। ये किसका था? ये कैंटिलीवर बीम का कैंटिलीवर बीम का है सर। यस सर। यस सर। स्टेप 1 में सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे, सबका अलग अलग। तो मोमेंट अबाउट पहले ए बी ये है सर, ए बी ये यूनिवर्सल यूटीएल है, इसका अलग निकालेंगे। मोमेंट अबाउट ए बी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, इसको सॉल्यूशन करने पर आएगा -106.67 किलोमीटर। फिर निकालेंगे सर बी यस सर, ए बी का निकाल दिया सर। फिर डी है सर, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 है, इसको सॉल्यूशन करने पे आएगा, उसका माइनस आया, इसका 1.106.67 आएगा। फिर सर बीसी का बी और सी का है सर, डी यहाँ से यहाँ तक का सर, बी सी का है यस सर, बी से सी का यहाँ उसका निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट बीसी पे आएगा, ये कौन है, सॉल्यूशन करने पर आएगा -30 किलोमीटर पर मीटर। और एक बीसी हुआ और एक ये सीबी होगा, सीबी का आएगा सर 30 किलोमीटर। सब में ऐसे करते चले जाएंगे। यस सर। फिर सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें सर, फिर स्टिफनेस निकालें, फिर और फिर सर इसका इंड मोमेंट डायग्राम ये वाला बनाएं, इसका यहाँ पे यूटीएल का, उसके बाद इसके सपोर्टेड मोमेंट डायग्राम है, और फिर इसको सुपर इंपोज किया। अब फिर सेकंड वाला का है सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ही ना। यस सर। ठीक है, आगे स्किप करो, तो दूसरा कांसेप्ट है तो उस पे आगे सर यही क्वेश्चन ही है। यस सर। और आगे क्वेश्चन है सर। थैंक यू सर, आई एम रियली सॉरी सर फॉर माय मिसबिहेविंग। सॉरी सर। बोलिए सर। क्या सर? यस सर। यस सर, एमडीएम बीएमडी यूजिंग एमडीएम का था सर। थैंक यू सर। ग्रुप नंबर यस, ग्रुप नंबर कितना 10 और 12 तुम लोग अपना नाम और ग्रुप नंबर ठीक है। Respected teacher and my dear friend, good morning, good afternoon all of you. My name is MD Akhlaq Ansari and my roll number is 19165.
and I am here to presentation PPT group number 10. 19 Yes, sir. Uh, I will discuss topic types of stress and strain. So second sorry. First is tensile stress and strain. Tensile stress applied bar tense the bar in elongate. टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है सर where P is applied normal load, A is across sectional area of the body, I is original length of the body, DL increased in length due to pull P acting on the body. Sigma, yes sir. Tensile strength, sir. Tensile strength. Tensile strength, sir. Tensile load by या normal load by cross sectional area sigma बराबर P by A. टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो फिगर शो नहीं हुआ फिगर शो नहीं tensile strength is given by increase in length and origin length. Or second is compressive strain and stress. Group number 2 also. MD Ashraf Uzama, sir. Some good morning to all of my teachers and my dear friends. My topic is elastic constants. Elastic constants are the parameter expressing the relation between the stress and the strain on the material. Within the stress range and the material exhibits elastic behavior. Modulus of elasticity is the example of elastic constant. High in covalent compounds such as diamond, lower in metallic and ionic crystals, lowest in molecular amorphous solids such as plastic and rubber. Young's modulus or modulus of elasticity in the tension or compression is a mechanical property that measures the tensile or compressive stiffness of a solid material. When force is applied lengthwise, it qualifies the relation between tensile or compressive stress, sigma, and axial strain, epsilon, in the linear elastic region of a material and is determined using the formula E is equal to sigma by epsilon. Its SI unit of Young's modulus is Pascal. And we have a graph here where we can see that the strain is changed according to the stress. It first changes linearly and then it changes somewhat like parabola. So yes. Myself, Ahmed Raja from Department of Civil Engineering. I can define the Hooke's law. Hooke's law is the law of physics that states that the force needed to stream or compressive spring from the distance x scales linearly from respect to the distance of fs is equal to kx, where k is a constant of vector characteristic springs and x is the small compressive to the total deformation of the spring. Fx is equal to minus kx. The rate of spring constant is k, where the force of extension is SI unit Newton per meter and kg per second square. The constant is known as modulus of elasticity. Elastic deformation. Now we discuss elastic deformation. Elastic deformation is the change of shape of the body
as a reaction to applied stress. The deformation is only temporary, and once the stress is released, then undeformed shape of the body is restored. क्या है भाई ग्रुप नंबर 4 में? नेम क्या है? शट डाउन नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग को बंद करें। अगर बोलेंगे तो रिकॉर्ड देखिए शॉर्ट कट में हम लोग जो निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग छुट्टी कर लेते हैं, खाना खाने का भी समय हो गया है और हमको भी एक जगह जाना है ना। तो थैंक यू फॉर दिस टाइप ऑफ ओकेजन। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना। रियली में आप लोग ग्रेट हो, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है ना। क्योंकि अभी आप लोग का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव में इतना कर ले रहे हो बहुत है ना। और आप लोगों के और अच्छा करना है, ताकि फाइनल ईयर आते आते, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं होगा। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। आप लोग बीटेक के बाद एमटेक में जाओगे तो 2-2 सेमेस्टर जो है आपको डिजर्टेशन होता है, दैट मीन्स थीसिस होता है। वो थीसिस और डिजर्टेशन जो है पीपीटी के मार्फत से ही आपको डिलीवर होता है ना। आपको 1 साल का जो कोर्स है वो आपको 10 मिनट में रिप्रेजेंट कर देता है कि आपने साल भर क्या किए। जैसे आप लोग 3 दिन 4 दिन का मेहनत आप लोगों को 5 मिनट में यहाँ डिलीवर हो जाता है, कि आप लोग दिख जाता है लोगों को कि आपने क्या किया है, कौन कट कॉपी पेस्ट किया है, कौन ऐसे ही आ गया है, कौन मेहनत किया है, वो सारा हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग से ये गुजारिश है कि नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें आप लोग इससे भी बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि जो भी नेट से, है ना, आप लोग उठाते हैं मटेरियल, उसको अच्छा तरह से कर लेने का, डिस्कस कर लीजिए, जो है आपको प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, है ना। जैसे यहाँ पर स्लाइड में प्रैक्टिस करते हैं उस तरह से 4 लड़का का ग्रुप बैठा हुआ है, 4 लड़का का ग्रुप है, 3 लड़का बैठिए, 1 लड़का जो है डिलीवर करेगा, वहाँ प्रैक्टिस करेगा, 3 लड़का जो है उसमें कमी खोजेगा कि क्या उसमें कमी है ना, रह गया है, नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसको डिलीवर कीजिए, इस तरह से बोलिए, है ना, तो अच्छा होगा। जैसे बहुत अच्छा ये लड़का, क्या नाम है आपका जी? सुशांत का देखिए बहुत अच्छा एक्टिविटी था, है ना। कैसे किस तरह से एक्शन में, किस तरह से जो है बोर्ड पर किस तरह से खड़े होना चाहिए, ये भी एक माने रखता है। टीचिंग स्किल्स ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का जो है ये भी एक स्किल्स है कि हम बोर्ड पर किस तरह से खड़े होते हैं। 5 नंबर अगर रहेगा तो 1 नंबर आपको बोर्ड पर खड़ा होने का ये है। किस तरह से आप जो है दर्शक के सामने वो जो है आप एक्शन देते हैं, वो भी एक, उस पर भी नंबर आता है ना। तो इस तरह सारा चीज पर ध्यान रखना है ना। और आगे आने वाले फ्यूचर में जो है इसी तरह से जो एक भी ये भी क्या है, एक पढ़ाई का एक टेक्निक है ना। आज देखिए कि 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने 6 महीना में पढ़ा है, जो आप जो है 4 घंटा में आपको रिवीजन हो गया। तो इससे बड़ा टेक्निक क्या हो सकता है। और जो इसमें जो है कंसंट्रेट होकर के देखा वो बहुत लाभान्वित हुए होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आगे फ्यूचर में कोशिश कीजिएगा। आगे आप लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस का है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है मॉस और स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना। विदाउट स्ट्रक्चर का सिविल इंजीनियरिंग नहीं है ना। इसलिए स्ट्रक्चर पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, है ना। मटेरियल भी है लेकिन ज़्यादातर आपको स्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियरिंग जो है स्ट्रक्चर से ही कहा जाता
ना, जिसको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं, वो सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज वो नहीं है उसके पास, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है थैंक यू फॉर दिस ओकेजन। चलिए, थैंक यू, ओके। होगा, अगले दिन एक ही बार लास्ट दिन होगा।